कितने आए अभी पार्टिसिपेंट कितने? हाँ हाँ गुड मॉर्निंग सर. Yeah, good morning. Good morning, Munialji. Good morning. Morning, Dr. Datta. Good morning, Dr. Dobhal. Yeah, I'm fine. So we're starting at 11 or 11:15, right? As you wish, we are ready. नहीं आप शुरू करो ना. हम तो मतलब ऑडियंस है. Sir, another 5 minutes we'll wait, sir. At 11 o'clock we'll start, sir. Another 5 minutes. So you have invited all the STI institutions people like that. The invitation गया है उनको. Yeah, we have circulated, sir. We have circulated. विशाल जी, आप वहीं से कर रहे हैं अपने रूम से? जी सर. ओके, ठीक है. Sir, should we start at 11 o'clock? Sir, DG sir. हाँ, 4-5 मिनट और रुक जाओ, पार्टिसिपेंट आ जाएंगे ना. सर, राइट सर. उस पे काउंसिल में सबको बता दो और वो आरएससी में फिर से रिमाइंड करा दो कि जुड़ जाएं. सर ये एक बड़े उसमें लगा के सारे बैठ जाएं, ऐसा भी हो सकता है इंडिविजुअली अगर पॉसिबल नहीं. जी सर, बताया सर.
सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार राय साहब, हाउ आर यू? Today is also Himalaya Day, like you know, 9th. Yes, sir. Yeah, sir. yeah. Yes, sir. I think आपका इसमें like काफी अच्छा fit हो गया, like you know, Uttarakhand doing this and Himalaya आगे Day. आज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सब है। Delhi University is organizing this year. या उसमें कुछ लोग होंगे। आओ साउंड को कर देना। अभी डॉक्टर अरुण रावत से बात हो रहा था जो डीबीटी में थे, लेकिन still he is there. This lot of good things about the council. Where is he? He is now in NIPGM, like after retirement. NIPGM, yeah, plant genomic. पीछे भी पूरा गीला है। मेरी बोतल वो है ना। Please go ahead. Sir. Namaskar and good morning to everyone. On behalf of Uttarakhand Council for Science and Technology, Government of Uttarakhand, and SSTP Division, Department of Science and Technology, Government of India, I welcome our Honorable Minister, Science and Technology, Government of Uttarakhand, Shri Banshidhar Bhagat sir, who is very keen to join us online, but due to some urgent piece of work, he is traveling right now, Haldwani, and he have conveyed his best wishes and given the message, which we will be playing shortly, a video.
Dr. Renu Sarup Madam, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India. Dr. Depriya Datta, Advisor, SEED, SSTP Division, Department of Science and Technology, Government of India, who motivate all the councils to do more scientific work. And in this festival, Vigyan Utsav, under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, uh, we have attended a number of workshops to fine tune this program, and sir have played an important role to draft all the programs and themes and sub themes. Dr. Rashmi Sharma Madam, scientist, Department of Science and Technology, SSTP Division and Seed Division, played an important role, and daily routine basis she remained in touch with all the councils to update the SSTP Division sites and organize and to organize various events. And Shri Ravi Prajapati ji, scientist, Department of Science and Technology. All the today's program eminent invited speakers, Professor Tej Pratap ji, Vice Chancellor G.V. Pant, although he is busy with some work, in his place the Dean Research, Shri Kashyap, Professor Kashyap will be delivering lecture on his behalf. Dr. Prakash Chauhan sir, Director, Indian Institute of Remote Sensing, Department of Space, Government of India, is a well-known science communicator and fellow of the National Academy of Sciences. His institute is organizing various certificate, diploma, MTech courses, PhD courses for the Indian participants as well as for SAARC countries and other. And I am fortunate enough to did my diploma in forestry and ecology way back in 2005. So in this address, he will be highlighting about his institutions and what all work they are doing and what all work they are doing for the Uttarakhand. Another eminent scientist, Dr. Ranjan Ray sir, a well-known chemist from Indian Institute of Petroleum, CSIR lab. His institute work is well known, biodiesel and other work, which he will be highlighting through his lecture. And Science and Technology Council, UCOST, is very closely associated with his institutions for last so many years. And Ranjan Ray sir is a very good science communicator. He speaks equally well in Hindi and English. Dr. Kalachand Sen sir, a well-known geologist, director of Wadia Institute of Himalayan Geology, Dehradun. Our council is very closely associated with these institutions. It's a Department of Science and Technology undertaking institution, and we do large number of workshops together. We deliver many popular lectures in our event. Another eminent scientist is Dr. Lakshmi Kant, is a well-known horticulture scientist, director of ICA Vivekanand Parvati Krishi Anusandhan Sansthan, VIPCA, located in far-flung Almora. And his institute is working very closely with the state government and council and transferring the technology to the farmers. And we have large number of programs, conducted large number of programs with them. And Professor Vandana Dhingra Madam, the professor in All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh. She is well-known nuclear scientist and working various on health issues. All India Institute of Medical Science, Rishikesh, doing the large number of research projects for state specific, and council have funded them largely. They are closely associated. Their director, sir, Professor Ravi Khan, sir, is very much associated with us, and Dr. Vandana Dhingra is associated with council for more than 1.5 decade when she was in HIST, Himalayan Institute, and now she is in All India Medical Institute, and she will be delivering on health issues and state-specific issues. Our Director General, sir, Dr. Rajendra Dobhal, sir, under his able leadership, we are doing the large number of programs related to science popularization, science communication, entrepreneurship development program, Himalayan climate change on Himalayan region, and large number of programs with DST also. So, and
all the colleagues from various science and technology council across the country, my colleagues from UCOST, I welcome one and all in this program Vigyan Utsav festival under the Azadi Ka Amrit Mahotsav. As you all know that this year all government institutions are celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, and Department of Science and Technology, Government of India decided that all councils under the SSTP division will organize the program related to popularizing the science across the country. And Department of Science and Technology is kind enough to give us the teaser, a small video. So it's basically an overview what all Vigyan Utsav means. And I request my colleague Shri Pradeep to please play that video. Shri Pradeep. 15 अगस्त 2021 को भारत ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया और साथ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाखों करोड़ों लोगों में नई ऊर्जा और चेतना जगाई। उसी चेतना को बढ़ाने के लिए देश के सभी विभाग विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। समाज के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नावीन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका नाम है विज्ञान उत्सव। विज्ञान उत्सव कार्यक्रम सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक चलेगा, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत मनाया जाएगा। विज्ञान उत्सव कार्यक्रम में STI के लगते विषयों आधारित राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां होंगी, जिसमें राज्य स्तर पर STI संस्थान, मानव क्षमता विकास, R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप, विज्ञान संचार और लोकप्रियता, महिला वैज्ञानिक, विज्ञान और समाज, फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता के लिए बुनियादी विज्ञान, आत्मनिर्भरता और उद्योग और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे विषयों को शामिल किया गया है। विज्ञान उत्सव कार्यक्रम हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाएगा। विज्ञान उत्सव में भारत के अलग-अलग राज्य के S&T काउंसिल्स भागीदार होंगे, जो अपने राज्य की विज्ञान प्रवृत्तियां और नवाचार के विभिन्न पहलू की झांकियों का प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ हम सब अपने आत्मविश्वास को आत्मनिर्भर भारत के लिए बुलंद करेंगे। इसे आप YouTube चैनल और SSTP के वेब पोर्टल पर देख सकते हैं। आइए आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मिलकर विज्ञान उत्सव के साथ मनाएं। विज्ञान उत्सव हम सबका अपना उत्सव। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा SSTP डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि आपने बड़े कम शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को अवगत कराया कि जो विज्ञान उत्सव है, जो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है, उस पर हम लोग भविष्य में 1 साल तक कौन कौन से कार्यक्रमों को करेंगे और इसका आयोजन का उद्देश्य क्या है, इसके अंदर कितने सारे सब थीम्स रहेंगे। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, इससे जो विज्ञान है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है, वो जरूर हमारे राज्य के कोने-कोने, देश के कोने-कोने तक पहुंचेगा और जो भविष्य में हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको मोटिवेट करेगा और जो जनमानस है उनको विज्ञान के प्रति जागरूक करवाएगा। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल DG सर, डॉक्टर राजेंद्र डोभाल सर, फॉर हिज इनॉग्रल एड्रेस। Thank you very much, Dr. Unyal. Since Dr. Unyal has already taken the names of various distinguished participants in this Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, so I will not take much time, but however, I have a distinct privilege to welcome Dr. Depriya Datta, who is the
advisor, then the DST, and the entire DST family led by the Secretary DST, who is basically instrumental in organizing this prestigious program. We have Dr. Prakash Chauhan, who is the director, Indian Institute of Remote Sensing in Dehradun. Dr. Anjan Ray, who is the director, Indian CSIR IIP, Indian Institute of Petroleum, Dehradun. Dr. Kalachand Sen, who is the director of Wadi Institute of Himalayan Geology. And we have Dr. Lakshmikant, who is the director, ICAR Vivekanand Parvatiya Krishi Anusandhan Sansthan. And we have Professor Vandana Dhingra, who represents All India Institute of Medical Sciences. Since she is coordinating the entire activities of the council in the AIMS, and we have requested her to present the case. We faced yesterday an unprecedented situation where our Honorable Governor resigned. Here you might have heard or read in the newspapers today. And therefore some derailments, and the Vice Chancellor of GB Pant University of Agriculture and Technology was slated to speak today. Couldn't make it. However, Dr. Shivendra Kashyap is the dean there, a fairly senior professor, outstanding in his work, will be replacing him, and will be discussing the issue, the activities being done in the GB Pant University. All other participants who are from different states, ladies and gentlemen, we were told that the under the STI umbrella, what else we can offer? Generally, to my mind, Bangalore, Lucknow, and Hyderabad is generally called the science institutions cities. They house maximum number of the national and the state science and technology related institutions. But way back, probably 2006 and 7, I gave a little project to someone that can you map the SNT institutions and relating SNT institutions which are available in Uttarakhand, and they published this. I think you can see this one. And in this, we have catalogued 76 universities, central, state, national, and regional institutions, and the state institutions. So then I found that we are not less than, the Bangalore, Lucknow, and I would say Mumbai also, and Hyderabad. When you see the history, we are probably the richest on account of establishing the STI institutions. I will just tell you about we have here Survey of India, and the George Everest was the product of Survey of India, or the vice versa, I can say. And the institution was established way back in 1767, and is still there. And this is one of the arm of the Department of Science and Technology, Government of India. We have IVRI, Indian Veterinary Research Institute in Mukteshwar. Basically, it was later his main office was shifted to Izzat Nagar in Bareilly. They are still lead in vaccine science. And Robert Koch, the Nobel laureate, worked there for a while, for some time. And still a remarkable, not only SNT institutions, but a very good tourist place also. When they have done the construction in the way that it can replace the refrigerators. By that time, there was no refrigerators, and they used to put the vaccine underground. And the wall they have created is still not penetrable. So we house the IVRI Uttarakhand. We house Forest Research Institute here way back in 93 when Derek Brandis
came to India basically he came to formulate the agriculture policy. And finally, we have FRI way back in Dehradun, 1905. Historical Institute. We have, after independence, G.V. Pant Institute of Agriculture and Technology. And we have Professor Kashyap sitting here. He will tell you about just morning I spoke, and you just tell the history about your university. And this is the first agriculture university of independent India on land grant basis. And the entire Pantnagar is still owned by the university, and whoever comes there demands land from them. And again, a very historical. Since we are celebrating today the Himalayan Day as well, we have couple of institutions who are completely dedicated to Himalayan study. And we have Vivekananda Institute of Parvatiya Vikas Anusandhan Sansthan, led by ICAR. And the history is very interesting. One of the Indian great scientists, Bosi Sen, met at random to Vivekananda, who was in Almora. And by that time, India was suffering a huge famine in West Bengal, where millions of people died. And Vivekananda told Bosi Sen, what research you are doing? People are dying there. What research you are doing? How your research is helping to these dying people? And that changed the course of research as far as the Bosi Sen was concerned. He, along with his wife, done a lot of work on agriculture sciences there. And the level of his research and his infrastructure was such. Then later, ICR took the entire establishment. It's a very big and the huge institution and very good help for the Uttarakhand in the Uttarakhand's agriculture sector. It's again history, and we have again a very good history of IIT. Today we call it IIT Roorkee. Before that, it was Roorkee University, and before that, it was the Thomson College, established way back in 1845. And probably less than 1% people know that we have in Indian, irrigation institute also here in Roorkee. And when the famous Ganga Nehar was created, a research institute was also created to ensure that how the water resources reaches to farm, to ensure that we get good agriculture production. And in Himalayan sector, I forgot mention the G.V. Pant Institute of Himalayan Environment and Development and Climate Change in Almora. They represent the entire Himalayan regions, livelihood system, environment, and whatnot. So we house many universities of national and international repute. I can very well say that the erstwhile Roorkee University, today is the IIT Roorkee, G.V. Pant University of Agriculture and Technology in Pantnagar, they still carry Indian flag abroad very effectively. As far as the council is concerned, we do networking with all these national and state institutions. And the philosophy of the council has been, since its inception, is to work in tandem with the entire ecosystem. And we don't work in isolation. And generally, for example, we are very successful in a couple of sectors. For example, in water sector, we work with the line department. We actually monitor the entire state's water quality on day-to-day basis, and we run their 26 laboratories, including one referral lab in Dehradun. And the daily water quality data from field comes to portal here, and then we vet it, and finally it is uploaded in the Government of India Ministry of Jal Shakti on daily basis in Devani. We also experimented for the first time a tripartite agreement between University of Applied Sciences in Dresden, Germany,
Jalsastan, the line department, and the UCOST, the Science and Technology Council. And we did very successfully the river bank filtration, and the entire budget came from the DST as well, I would mention here. We very successfully implemented the Inspire program of the DST. And later, when it took the good roots in the states, that we transferred it to the line department. You know, the work of council is to first learn the line institution about the importance of not science but technology. Many of the departments are technology savvy. For example, we have public works department. We have taught them how to do, GIS, real-time data, how to map it. Now they have. I'm very happy that many of the line departments under the SDI project have created the GIS cells. All the 13 districts of Uttarakhand have GIS cells, and they have 2 professionals working on and uploading data on daily basis. However, I think there are still gaps, because if you want to bring about the revolutionary, or I would say a dramatic change in the routine work, it takes time. It's not that easy to do things overnight, because the entire system is to be geared towards that new system. We have had some very good outcome of the projects which have patented. We have patented some GI we have also registered, and the focus of research and development of the council always been on the natural resources, whether it's water, forest, biodiversity, agriculture, housing. All we generate knowledge, we generate empirical data, and we deliver products as well, but based on the locally available resources. This has been our policy. We have our policy that work on network basis with the departments. All the directors we are seeing today, we work together. We all, any institution, and we have very good friendly relations, and they also work with us very effectively. And the second policy is state oriented. Technology may be from Germany, maybe in any part of the world, but having local importance. The third one is, we don't invest much of money. In fact, we fear seeing the big amount. So we want to deliver highest quality research published in the peer-reviewed journals, national and international, earning international and international patents, books, and all kind of standards we maintain, but with a very less amount. We don't want to invest much money, since we very well know, if you have instrumentation, if you have all things, if you have knowledge base, if you have good faculty, then all you need is some little support for manpower, some computer, some travel, and you can do wonders, since you have already built-in institution. And we are very fortunate that we have such already built-in, very developed institutions, that we don't invest much in them, and with a little money, we generate a lot of knowledge. And at the same time, we have a fairly good amount of external funding also from the state departments and from the central government. And one of our projects run by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is rated #1 in product delivery. And we have developed 18 products based on available natural resources. I will, the people are waiting, and they are full of, they are far much equipped than me today. Since they are supposed to speak. My job is simply to set the ball rolling ab initio and to welcome you all. And I again congratulate you on the
occasion of completing a very successful 75 years of Indian independence. Thank you very much, and Jai Hind. Thank you very much, sir, for giving an overview of historical perspective of science and technology in Uttarakhand. Very rightly pointed out that more than 76 institutes, central government, state government is located, and most of them having their headquarter here. And you very rightly pointed out that science is deeply rooted in Uttarakhand. I think shortly after couple of months, History of Sir is organizing one Value of Word program, under which history of science session will be discussed, in which there are given outline of that session also. So I request all of you, we will be sharing that link with you. Please join that. This will be very interesting session. And sir very rightly pointed out about the council's activities since 2005. I think we are among one of the youngest council of the country, and from two rooms to we have shifted to our own premises. Now we are moving ahead towards Science City, and probably this will be the first council in the country those will be building up the Science City. So it's all due to the collective efforts of all the councils, Department of Science and Technology, and land departments, through which we run n number of programs. I just deem it fit to mention here that of late we have finalized and given work order to MS Chelsea of the US to construct our Science City as an architect. So it's again a very good achievement that the kind of Science City we propose to build is of the not less than the US levels, because we had a criteria in our mind that the Science City will be not that conventional. It will be state of the art. Thank you very much I'm sorry for intervention. I forgot to mention this. Thank you very much, sir, for updating all our participants. And I request all the participants sometime, definitely when COVID will be minimized, we will be organizing some sessions how to what all about the Science City. So I think that time most of you can come over Dehradun and give your feedback about all that. So thank you very much, sir, for update. Presently, we are running more than 9 projects funded by Department of Science and Technology, WTI division, C, SSTP division, NCSTC, DBT, Ministry, MOEF, and then NCSN. So it's all possible due to the guidance of our DG sir. And sir, I made things easy for my colleague Dr. Mishra, who will be delivering a lecture on strength of council. Before that, our Honorable Minister Science and Technology, Shri Banshidhar Bhagat sir, given his message. As I told you earlier, he was very keen to be with us, but due to some urgent piece of work, he left for Haldwani. So I request my colleague, मैं अपने colleagues Shri Pradeep और Shri Goyal जी से request करूँगा कि सर का Honorable Minister sir का वीडियो चलाया जाए. Left for Haldwani. So I request my colleague, मैं अपने colleagues Shri Pradeep और Shri Goyal जी से request करूँगा कि सर का Honorable Minister sir का वीडियो चलाया जाए. Left for Haldwani. So I request my colleague, मैं अपने colleagues Shri Pradeep और Shri Goyal जी से request करूँगा कि सर का Honorable Minister sir का वीडियो चलाया जाए. Left for Haldwani. So I request my colleague, मैं अपने colleagues Shri Pradeep और Shri Goyal जी से request करूँगा कि सर का Honorable Minister sir का वीडियो चलाया जाए. Left for Haldwani. So I request my colleague, मैं अपने colleagues यार इसमें मिस्टर मिसिस डॉक्टर कुछ नहीं आता रिपोर्ट में, ये वंदना तो कुछ भी नहीं, गणमान्य युवा रिपोर्ट में नहीं आता. मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ. प्रसाद को समर्पण के लिए राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, जो कि यूकास्ट के नाम से लोकप्रिय है, मुझे कहने में अपार खुशी हो रही है
कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आम जन की वैज्ञानिक समझ और नवीन तकनीकों को पहुंचाने में समर्पित हुआ। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के पिछले वर्ष 2019 में आंतरिक विज्ञान केंद्र उच्चीकृत कर साइंस सिटी देहरादून में स्थापित कर उत्तराखंड की देश की जनता को समर्पित किया गया है। यूकास्ट के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र डोभाल के कुशल प्रशासन और प्राथमिकताओं और शोध में गति आई है। कृषि एवं वैज्ञानिक में उत्पादकता, मिट्टी की उर्वरकता, सिंचाई के परंपरागत फसलों के उन्नत बीज, संस्करण एवं विपणन, पीने के लिए स्वच्छ जल, जंगलों की आग को बचाने के लिए, जल विद्युत वायु प्रदूषण को ठीक करने के लिए, मौसम परिवर्तन में लुप्त होती प्राकृतिक क्षमताओं को बचाने के लिए महानिदेशक डॉक्टर डोभाल के नेतृत्व में यहाँ अच्छा काम हो रहा है। अल्मोड़ा में भी इसकी स्थापना की गई है। 26 एकड़ भूमि पर देहरादून में साइंस सिटी और का निर्माण हो रहा है, जिसमें 173 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और मुझे खुशी है कि हमारे अल्मोड़ा में भी इसके लिए 1 हेक्टेयर भूमि ले ली गई है और इसमें भवन निर्माण का काम भी प्रारंभ किया गया है। निश्चित रूप से राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के नेटवर्क के कारण हमारे युवा, हमारे देश प्रदेश की जनता वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में आगे बढ़ेगी और काफी संशोधन इसके कारण हम अपने प्रदेश में कर सकेंगे। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई दूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने संक्षिप्त में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के क्रियाकलापों के बारे में हमें बताया और आप भविष्य में जो हम लोग कार्यक्रम करेंगे उसमें कोशिश रहेगी कि सर हमारे साथ ऑनलाइन में भी जुड़े। थैंक यू वेरी मच सर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट माय कलीग डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, who is a senior scientific officer, will be touching up upon the council strength and what all we have done to disseminate science and technology across the state and what all we are doing future plans. So over to Dr. Mishra, please. Good morning to you all. I am Dr. Ashutosh Mishra, Senior Scientific Officer in UCOST. On behalf of the Council, I am presenting here. As we know that we are celebrating 75 years of independence, and on this occasion, we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav under the theme STTI institution at the state level. Next, please. As we know that Uttarakhand State Council for Science and Technology was established in 2005 and headed by Dr. Rajendra, Dobhal, Director General. It comes under Department of Information and Science Technology, Government of Uttarakhand. Next, please. First of all, let me brief about the council activities and strength in terms of STI ecosystem in the state. As you are aware that the vision of the council is to provide technology-based solutions to common problems, to make science at the core of the state strategy for development, and to pursue high-end research through networking. And the goal is to transform the state into a modern science-based society. As far as mission of the council is concerned, it is to promote SNT for socio-economic benefit of the state. Next, please. Most of the council works like that. There is two body, the council general body as well as executive body. Next, please. This is our main administrative block of the council, which covers 3422 square meter area. You can see the beautiful file on the diary. Next, please. We have regional science center here, and
if we talk about the total footfall till date in the center, so we have more than 2 lakhs visitors in Business Science Center, and RSC earns more than 1 CR till date. Next, please. RSC Almora is another center added to the council. The construction is going on, and we hope it will be completed in next year. Next, please. We have a beautiful biodiversity park in our campus. It was funded by Satluj Jal CSR activities and developed by Forest Institute Dehradun. Total project cost was around 50 lakhs. It has more than 700 plants with 200 medicinal species. Honorable Governor Dr. K.K. Paul and Padma Vibhushan late Shri Onazadi inaugurated this biodiversity park on February 2009. We have a very beautiful video of this biodiversity park. Can we have a video, please, Mr. Pradeep? Progress. Very nice. This video was taken 3 years back. Now it is a totally green campus. Now, next, please. As DG sir rightly said that the Science Congress, Science City is coming up. Before last year, Hon'ble CM of Uttarakhand inaugurated the Science City in Dehradun. We have a video now. The Chelsea Private Limited from New York, as New Delhi, they have finalized architect for the Science City. Have a look in this video, please.
Next, please. This is the total project cost, 173 crore, 88.2 CR from Government of India, and government share is 84.8. Next, please. This is the aerial view of allotted land for Science City. Next, please. We will have the different facilities in Science City, like Science Exposition Hall, Science Exposition Hall, Space Odyssey, Convention Center, Science Park, and great complex with visitor amenities. Next, please. If you talk about the science, technology, and innovation ecosystem in the state, we have different programs in the council. We have research and development and demonstration, in which we do R&D and extension programs, seminars, symposium, and state assembly congress. In science popularization program, we have regional science center, through which we promote so many science popularization activities in the state. And we have an entrepreneurship development program in which different TRCs, technological resource centers, have been established in the state. We have Himalayan system science, many projects related to Himalayan biodiversity is going on. Next, please. As far as research and development program, till date, Council has sanctioned 328 research projects within the state. Next, please. If we talk about the discipline-wise sanctioned project in the state, major chunks of the project sanction goes to life sciences, followed by medical sciences. Next, please. And major part of sanctions goes to government sector, but it covers all, either government, private, or NGO sector. Next, please. Till date, 394 fellowships have been given under R&D sector. Generally, we talk about employment generation in the state. It is a good program through which we fund lots of projects through the state universities or institutions, through which researchers get fellowship. Next, please. We have several videos related to these R&D projects. Few of them are shown here. We have taken personal interview of the concerned PIs. देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ के स्वच्छ वातावरण में मौजूद हैं हजारों अनमोल तत्व। ये तत्व किसी न किसी रूप में खेत खलिहान को अपना साधन बनाते हुए उत्तराखंड के परंपरागत दुधारू पशुओं में पहुंच रहे हैं। इन्हीं तत्वों के कारण सैकड़ों वर्ष से उत्तराखंड की बद्री गाय का दूध अपनी गुणवत्ता के लिए विख्यात रहा है। अब पहली बार यूकॉस्ट यानी उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने IIT रुड़की के वैज्ञानिक प्रोफेसर नवीन नवानी के साथ मिलकर बद्री गाय के दूध का वैज्ञानिक परीक्षण किया है। ये उत्तराखंड की जो नेटिव ब्रीड है बद्री गांव, उसके DNA का एनालिसिस किया। हमने 10 गांव से, हर गांव से लगभग 5-5 सैंपल कलेक्ट किए, उनका DNA आइसोलेट किया और DNA आइसोलेट करने के बाद हमने PCR की टेक्नोलॉजी से उनका A2 और A1 जो प्रोटीन है मिल्क में बीटा कैसीन का, उसका अध्ययन किया। हम लोग कोटद्वार से स्टार्ट हुए सैंपल लेना, गुमखाल से लेकर चौबटा खाल और गवाणी गांव तक हम लोग गए
और वहाँ से अलग अलग जगह से हम लोगों ने सैंपल लिए और फिर उनके डीएनए का अध्ययन हमने अपनी लेबोरेटरी में आईआईटी रुड़की में किया। इसके लिए हम लोग अलग अलग लोकेशन पे इसलिए गए, एक जगह से सैंपल इसलिए नहीं लिए क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे भी गायों के गर्भधान होता है वो एक ही बुल के द्वारा आइसोलेट करने के बाद हमने पीसीआर की रिलेटेड से उनका A2 और A1 इसलिए हमने जो है अलग अलग गाँव में जाके अलग अलग जानवरों को ताकि इस ब्रीड का हम लोग कोटद्वार से स्टार्ट हुए सैंपल लेना से लेकर चौबटा खाल और दवानी गांव तक हम लोग गए और वहाँ से अलग अलग जगह से हम लोगों ने सैंपल लिए और फिर उनके डीएनए का अध्ययन हमने अपनी लेबोरेटरी में आईआईटी रुड़की में किया। इसके लिए हम लोग अलग अलग लोकेशन पे इसलिए गए, एक जगह से सैंपल इसलिए नहीं लिए क्योंकि ज्यादातर जहाँ पे भी गायों के गर्भधान आइसोलेट किया और डीएनए आइसोलेट करने के बाद हमने पीसीआर की रिलेटेड से उनका A2 और A1 इसलिए हमने जो अलग अलग गाँव में जाके अलग अलग जानवरों को शायद वो डायबिटीज और हार्ट की स्टार्ट हुए सैंपल लेना तो हम लोग ये देखना चाहते थे कि बकरी गाय के अंदर क्या स्टेटस है। तो इस 50 जानवरों का डीएनए अध्ययन करने के बाद हम लोगों को ये पता चला कि 90% जो बकरी गाय के सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किए उनके अंदर इसका मतलब ये है कि जो अच्छा अलील माना जाता है वो है। और इसमें अच्छी बात हम लोगों को ये भी पता चली क्योंकि हर जानवर के अंदर एक पुरुष का सेट जो है मदर से आता है और एक फादर से आता है। इस केस में बकरी गाय में सभी गायों के अंदर दोनों के दोनों बेनिफिशियरी होने के बाद एक से ज्यादा अलील इस रिसर्च के लिए प्रोफेसर नवानी ने यूकास्ट के बाद धन्यवाद। इस अध्ययन के बाद हम लोगों को बकरी गाय के संरक्षण के लिए केस बनाने के लिए काफी ज्यादा बल मिल रहा है और मैं उत्तराखंड काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत धन्यवादी। एम्स ऋषिकेश के सर्जरी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अमित गुप्ता पित्त की थैली के कैंसर के उपचार के लिए पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं। लगातार शोध करने के बाद डॉक्टर गुप्ता को एक ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हाथ लगी है जिससे पित्त की थैली के कैंसर का समय रहते पता लगाया जा सकता है। साथ ही भविष्य में इससे इस बीमारी से पीड़ित मरीज का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। एक नई कीमोथेरेपी की ड्रग्स या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स कहेंगे वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं पित्त की थैली के कैंसर के मरीजों में। अभी हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं कीमोथेरेपी के। हम मुश्किल से 2 प्रकार की ही अभी मेन कीमोथेरेपी है हमारे पास और उनके भी सक्सेस जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि उस डायरेक्शन में या उस एरिया में हम काम करें। भारत सरकार की एक विशेष रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में वातावरण में कुछ ऐसे तत्व हैं जिस कारण इस क्षेत्र में पित्त की थैली के कैंसर के मरीजों की संख्या देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस जानकारी के बाद यूकास्ट यानी उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एम्स ऋषिकेश ने साथ मिलकर उत्तराखंड और आसपास के मरीजों के बेहतर उपचार के लिए इस रिसर्च को संपन्न किया। कुछ टारगेटेड बेस्ड कीमोथेरेपी हम डिवाइस कर सकते हैं जो कि डायरेक्ट हिट करेंगे कैंसर के सेल्स पर। हमने यूकास्ट की फंडिंग के जरिए हमने उसको शुरुआत करी थी आज से 2 साल पहले और अब वो प्रोजेक्ट हमारा लास्ट स्टेज में पहुंच गया है, ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। यूकास्ट यानी उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी
प्रदेश में कैंसर जैसी घातक बीमारियों के कारणों का पता लगाने के लिए लगातार विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर सुनील सैनी ने कैंसर रोगियों की बारीकी से जांच पड़ताल की। शोध में पाया गया कि अगर समय पर जांच पड़ताल की जाए तो 1/3 रोगियों की बीमारी का पता समय से चल सकता है। यहाँ 12,500 रोगियों का परीक्षण करने के बाद एक बात सामने आती है कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण तंबाकू सेवन और धूम्रपान ही है। पुरुषों में लगभग 60% कैंसर ऐसे थे जो कि तंबाकू के सेवन से संबंधित थे। तो लोगों को जागरूक किया जा सकता है, तंबाकू का सेवन नहीं करें, वो सिगरेट नहीं पिए। शोध में देखा गया कि ज्यादातर कैंसर रोगियों की उम्र 50 से 70 वर्ष के बीच ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ कैंसर के पैटर्न पर ही शोध नहीं हुआ, बल्कि कैंसर के रोगियों में विकसित हुए ट्यूमर से टिश्यूज को निकालकर सुरक्षित भी रखा गया है। इन टिश्यूज का अध्ययन कर ये भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार के उपचार से रोगी ठीक हुआ। इस शोध का मुख्य उद्देश्य भविष्य में इस बीमारी के उपचार को तलाशा जाना है। UCOST in Uttarakhand is again a very promising, very encouraging, very supportive agency which is supporting research not only in medicine but many other fields of health and wellness. Yes. Recently, an innovative idea came in our thought that how the farmers can be benefited by doing less crops and earn money out of that. Then for that we have taken 2 crops. Just we have started this experiment 3 months back, and you can see how the Ganoderma, Lucidum and Cordyceps militaris grow in laboratory condition in our premises. Can you show the video please? हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे काव्य और एक बार फिर से आज आपके सामने विज्ञान धाम का ये गेट और अंदर आपको लेके जा रहा हूं। आज क्यों? विशेष तौर पे मशरूम की एक बहुत ही जबरदस्त प्रजाति जिसको डेवलप करा गया है, उसकी हार्वेस्टिंग होनी है आज और डीजी डोभाल सर और उनकी पूरी टीम है वो यहाँ पे है। आइए, और ये मशरूम अपने आप में बड़ा कमाल है। क्यों खास है और क्या कुछ इसमें खास है, आपके लिए क्यों खास है, वो भी आपको मालूम चलेगा। चलिए आइए अंदर चलते हैं। ये रेडी है और इसमें सारे स्पोर्ट्स आने लगते हैं, ये समझाएंगे कि ये हार्वेस्टर रेडी है। उस टाइम 1-1.5 महीने पहले तो आए थे हम, तभी छोटे-छोटे थे, अभी बड़े हो गए। यहाँ पे एक्चुअली मिस्ट चैम्बर है ना पूरा, ये उसके हिसाब से टेम्परेचर। तो सर फाइनली मेहनत रंग लाई और कलर भी बड़ा निखर के आया है, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा गौरव का पल है जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तराखंड में पहली बार गैनोडर्मा की क्रॉप आई है जी। और जब हम इसको शुरू कर रहे थे तो हमको 0% होप थी कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा जी। लेकिन जो जवान बच्चे हमारे हैं जी, जिनका अपना एक पैशन है जी, मैंने इनको लगाया, मैंने किसी अधिकारी को इसके पीछे नहीं लगाया जी। और ये लोग दिन में रात में आके इन लोगों ने इसको सफल बनाया और इसको सफल 1.5 महीने पहले ही हो गया। हम 3 महीने का लेके चल रहे थे, ये 1.5 महीने में हो गया जी। और इसका कॉस्ट मार्केट में आपके हाथ में है। अगर आप कैप्सूलर फॉर्म में बेच रहे हैं तो आप इसको 30 से 40 हजार रुपए पर केजी हो जाएगा। अगर आप इसको रॉ बेच रहे हैं 6-7 हजार रुपए किलो जी, ड्राई करके बेच रहे हैं तो 15 से 20 हजार आपके हाथ में है मार्केटिंग जी। और ये देखिए साइंस की तरक्की कहाँ तक लाई है। इसको अगर आप इतिहास पढ़ें तो आम लोग इसको खाने के लिए अलाउड नहीं थे जी, क्योंकि बड़ा कम होता था और इसके अंदर इतने ज्यादा वैल्यू है कि केवल राजा ही अलाउड होते थे खाने को।
आज हम सब राजा हैं। आप भी राजा, हम भी राजा, और आप इसको ले जा सकते हैं जी, और आप खाइए इसको जी। इसके अंदर जितने जो खास करके जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, और भी काफी, मैं ज्यादा केमिस्ट्री नहीं बोलूंगा कि आम लोग नहीं समझ, ये आम लोगों के लिए है जी। ये आपके जो पूरे शरीर को चेंज कर देता है, यौवन में लाता है, पूरे सिस्टम्स को ठीक करता है, सारी इम्प्योरिटीज खत्म करता है, सारे जो आपके न्यूरल डिसऑर्डर्स हैं उसको ठीक करता है, और तमाम आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं इनके फंक्शनिंग को दुरुस्त करता है जी। इसको चूर्ण बनाइए और उसके ड्राई करके और इसको उबाल के जैसे चाय के साथ लीजिए, दूध के साथ लीजिए, किसी खाने के साथ लीजिए जी। लेकिन ये करा क्यों? ये इसलिए करा है, हमारा जो ये सोच है, ये हमने एक योजना है हमारी पंडित दीनदयाल योजना, स्पॉन्सर्ड है भारत सरकार की। हम इसको उत्तराखंड के गांव के लोगों तक इसको भेजना चाहते हैं जी। मार्केटिंग हम कराएंगे यहाँ से, वो खाली उगा लें इसको। हमने एक बैच को ट्रेनिंग दे भी दी है, लेकिन करने के लिए हम ये अलाउड इसलिए नहीं कि हम पहले खुद करके देखना चाहते हैं। राइट। अब कल्पना कीजिए कि आप छोड़िए गेहूं चावल, अगर यही उगा के एक आदमी ने अगर इसको एक महीने में तो आराम से 1 लाख रुपए तो लेट के कमा लेगा जी। ये कमाल है साइंस का। बिल्कुल। तो ये चाहते हैं हम कि ये गांव में जाए, पर्वतीय, वहाँ नेचुरल क्लाइमेट है जी, वहाँ तो इतने खर्चे की जरूरत भी नहीं। बिल्कुल। आवश्यकता इस बात की है कि उनका प्रशिक्षण दिया जाए, उनको मार्केटिंग दी जाए, उनको सीड का सप्लाई। सीड नहीं है उत्तराखंड में जी, ये हम हिमाचल से लाए हैं। एक बार सफल हो जाएंगे तो हम उसको भी करेंगे माशाल्लाह, वो भी होगा जी। तो ये है सर। बिल्कुल। तो आज बड़ा खुशी का पल है। बिल्कुल। और आरजे काव्य साथ में तो आगे बिल्कुल। अगर कोई इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो या आप लोगों से कांटेक्ट किस तरह से किया जा सकता है? वो सीधे यूकॉस्ट आ सकता है जी, और ये लड़की का इंटरव्यू लीजिए जी। ये भी है, मोबाइल नंबर अवेलेबल है, वेबसाइट अवेलेबल है। बिल्कुल। हम बिल्कुल तैयार हैं साहब जी, आप करिए तो सही। क्या बात है। सोने की बिल्ली हम बनाएंगे, म्याऊं आपको करना। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आपसे भी फाइनली बात करते हैं। आप अभी बता भी रहे थे सर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसमें आप सब लोगों के हाथ लगे हैं, तो फाइनली ये जब आपके खुद के हाथों में है, कैसा महसूस हो रहा है इस वक्त? सबसे पहले मैं तो सर को ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों को मौका दिया सर ने कि इस तरह से आकर के आप एक जो मशरूम है औषधीय मशरूम है, और इसको सर एक दिव्य मशरूम भी बोलते हैं हम। और सर ये मशरूम हमारे जो बॉडी है, जैसे कि सर ने भी बताया था कि हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, और इसमें जो टर्पेंटिन्स होते हैं सर, वो एज ए मतलब ये बीटा टेस्ट होता है, और ये भी हमारे स्किन को या ये जो सेल्स होते हैं उसको ये करता है, रीजनरेट करता है, और फिर उसका स्कैन करता है, फिर वो सही करता है सर जी। तो इसी तरह बहुत सारे इसके गुण हैं। तो हम लोग इसको चाहते हैं कि कुछ किसानों को, कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी हम ये मौका दे करने के लिए, और आगे वो करें और इसका बेनिफिट लें, और आने वाले टाइम में वो भी एक एंटरप्रेन्योर बने और अपना बिजनेस को एस्टैब्लिश करें। ये बाई प्रोडक्ट है कोविड-19 में। जिस समय कोई कुछ नहीं कर रहा था, तो ये मेरे पास आए कि साहब कुछ काम दो। ठीक है जी। तो मैंने कहा काम तुम्हें क्या दिया जाए, तुम कर ही क्या सकते हो, क्योंकि ऐसा काम तो नौकरी तो होती नहीं है जी। तो इन्होंने कहा साहब हम गैनोडर्मा में और मशरूम्स में हम लोग जी स्पेशलाइज करते हैं, हम पे इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ जी। तो मैंने इनसे यहीं पे बटन मशरूम और ढेंगरी ऑयस्टर मशरूम जी, गैनोडर्मा जी, और अब इनसे मिलिट्रीज का आगे हो गया जी। उसका थोड़ा एयर कंडीशनिंग चाहिए जी, वो 5 से 7 लाख रुपए किलो है जी। अब हम मिलिट्रीज करेंगे जी। तो कोविड-19 में जो हमने कभी सोचा नहीं था जी, वो यहाँ पे होने लग गया जी। और इसको हम जो है, जो खासकर में यूथ हैं जी और पढ़े लिखे हैं जी, और थोड़ा भी वो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत पैसा भी नहीं लग रहा है इसमें। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इतना तो सरकार ऐसे ही लोन दे देती है, 50,000 1 लाख रुपए जी जी, आराम से शुरू कर सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्या अब ना कमाई तो भाई मैं क्या करूँ।
बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। और सर अभी हाल ही में हमारे को ऑर्डर्स भी आए हैं कहीं कहीं जगह से, जैसे दुबई से भी आए हैं, अच्छा। वहाँ से भी आए हैं, तो वो लोग का डिमांड है जैसे 100 kgs, लेकिन हमारे पास है नहीं अवेलेबल, तो हम सर इसको आगे कर सकते हैं सर। और दिल्ली में भी कुछ लोग ले रहे हैं, इसका टिंचर भी डिमांड में कर रहे हैं, और कुछ पाउडर के फॉर्म में भी ये ले रहे हैं। तो सर ये हम अगर चाह रहे हैं कि कुछ फार्मर्स को भी बेनिफिट हो इसके, तो ये लिंकेजेस हो सकते हैं सर उनके साथ। बिल्कुल, तो ये मौका आप लोगों के पास में है। सर, और सर हमारा एक कृषि वन रिसर्च सेंटर है जो सर ने हमें ये मौका दिया करने के लिए और जुड़ने के लिए। और सर हम इस क्षेत्र में सर लगभग 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और अभी सर से मिले और सर ने हमें इसका जो है पास भी कर दिया कि हाँ आप लोग काम करो यहाँ पे। और भी सर हैं हमारे, जैसे आशुतोष सर हैं, उनियाल सर हैं, और आपके और वो ये सर ने हमने बहुत ही सपोर्ट किया कि आप लोग अच्छे से करो यहाँ पे और आगे आप ऐसा करो कि ये फार्मर्स की तरफ ये बढ़े। बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल दूसरों के लिए यानी आप सब लोगों के लिए भी ये मौका है कि आप ज़रूर से यहाँ पे आइए। मैं सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जो इन्फॉर्मेशन है आपको स्क्रीन पे लिख दूंगा और कॉन्टैक्ट कीजिए। और ये जैसे सर ने कहा आपदा में अवसर था, तो आप भी अवसर में बदलिए इसको। आपके लिए शुभकामनाएं सर। ये आइए ना सर। ये कि मशरूम तो पुराने तरीके का है, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे जो एडवाइज़र हैं डॉक्टर FNASc हर्ष, उन्होंने इसको बनाया है, लेकिन अब इसमें रिसर्च में शोध की बहुत आवश्यकता है। अभी हम इसके स्ट्रेन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं और इसकी अभी और जो लो कॉस्ट टेक्निक्स हैं, अब हम उस पर भी इसमें आगे काम करने का सोच रहे हैं। परफेक्ट जी। जैसा कि सर ने बताया कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आरजे काव्य और एक बार फिर से विज्ञान धाम में यूकॉस्ट की ये पूरी बिल्डिंग। और आपको मालूम है कि जब हमने ओहो रेडियो की शुरुआत करी थी तो हमने कहा कि ये 5S के सिद्धांत पे चलेगा, जहां समाज, साहित्य, संगीत, स्पोर्ट्स और संस्कृति की बात होगी। लेकिन इस 5S में एक ऐसा और जुड़ गया है, वो है साइंस। और जब से यूकॉस्ट में आना जाना हुआ है, यहाँ पर हम आ रहे हैं, नई नई इनोवेशन देख रहे हैं जो हमारे पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पर आते हैं कुछ न कुछ देखने और सीखने को मिलता है। तो आज क्या कुछ आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको जो है मशरूम की एक प्रजाति के बारे में बताया था इस वीडियो में जी। तो आज क्या कुछ खास है वो आपको आगे मालूम चलेगा। चलिए आइए। डॉक्टर डोभाल सर के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिएगा, किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है और मकसद क्या है। देखिए, आपको याद होगा मार्च में आए थे। बिल्कुल। और अगर मेरा आपने जो इंटरव्यू लिया था उसको निकाले, मैंने कहा था मैं आपको फिर बुलाऊंगा 2-2.5 महीने के बाद, और हम ये भी चैलेंजिंग टास्क है, इसको करेंगे और आपको करके दिखाएंगे। बिल्कुल। और आज देखिए ये शुभ घड़ी आ गई कि हम फिर दूसरी वैरायटी को लेके, ये हमारे हाथ में है जी। ये कॉर्डियोप्सिस मिलिटरीज है जी। ये कीड़ा जड़ी जो हमारे यहाँ होती है उसका एक इफेक्टिव सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि जो कीड़ा जड़ी जो हमारे अल्पाइन जोन और जहाँ बर्फ पड़ी होती है वहाँ होती है, वो बड़ी एक लिमिटेड मात्रा में होती है और उसको ऐसे उगाना बहुत ज़्यादा अभी संभव नहीं हो रहा है जी। DRDO ने उसका प्रोटोकॉल तैयार किया है और वो किसी प्राइवेट से कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग उसको बनाएंगे कीड़ा जड़ी। इसका नाम मिलिटरीज इसलिए है कि ये मिलिट्री के लिए तैयार किया गया था चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा। अच्छा। कि अगर वो उनको कीड़ा जड़ी कहते हैं कि दिया करते थे एनर्जी के लिए,
अब उतना होता नहीं है, तो बहुत बड़ी सप्लाई चाहिए, इसलिए इसको ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई जी। ये कई देश इसको पैदा करते हैं। इसका जो कॉस्ट है वो ड्राई वेट पे कम से कम 5 लाख रुपए किलो है। अच्छा, इसका जो है और इसकी जो खूबी है, ये एक चीज में इतने गुण लिए हुए हैं। ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, पूरे इम्यून सिस्टम को रिजेन्युएट करती है। ये आपके नर्वस सिस्टम को ठीक करती है। ये आपके डायबिटीज को दुरुस्त करती है जी, हाइपरग्लाइसीमिया के लिए काम आती है। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए काम आती है। इसके बहुत गुण हैं और इसमें यू कैन फाइंड ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स इसके अंदर होते हैं। इसमें कोर्डिसेपिन होता है जी, और ये तो हमने इसका श्री राम लेबोरेटरी से टेस्ट भी कराया कि कितना है। ठीक है, वो 8 से 11 के बीच होना चाहिए, 7 से 11 के बीच। 11 से ऊपर होगा तो इफेक्टिव नहीं होगा, नीचे होगा तब भी बेकार होगा। इसका 10 पॉइंट कुछ है। अच्छा, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये जो हमारा हो रहा है ये बहुत ही अच्छी वैरायटी का है। राइट, आज हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपने 2 ऐसे लोग बुलाए हैं जो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं पहाड़ों में। बिल्कुल, उनसे मैंने कहा है कि आप इसको लेके जाएं, क्योंकि अब हमने ये तो कर दिया है, ट्रेनिंग दे दी है। अभी एक साहब आपको बताएंगे कि वो ट्रेनिंग, उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग ली, वहां भी हो रहा है जी। लेकिन हमारी प्रॉब्लम आज भी वहीं पर है कि जैसे ऑर्डर मिल गया 2200 कुंटल का जी, और हमारे पास है 20 किलो जी, तो कोई आपके पास 20 किलो से दवाई से चल के तो आएगा। राइट, तो अब हमारी जो नेक्स्ट टायर की मुहिम होगी इस समय, जो कृषि वन शोध केंद्र के लड़के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं जी, कि हम 2200 कुंटल के ऑर्डर पूरा करें जी। प्लान बनाए, बिजनेस प्लान, उसकी भी आज एक प्रेजेंटेशन है जी। कैसे इसको हम उस लेवल पे ले जाएं, तब जाके जो उसको कर रहा है उसको फायदा मिलेगा। हाँ। फिर यही चीजें सब जगह जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगी जी, सोशल स्टेटस बढ़ेगा। बिल्कुल, और जो पलायन वाली समस्या लोग, जो यंग लड़कों का एंटरप्रेन्योरशिप है, ये साइंस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया, इसमें पूरा लेबोरेटरी एनालिसिस है, इसके प्रोसीजर है, इसी के लिए काउंसिल काम करती है। राइट, जो औरों से फर्क है, तो ये मैं आपको बताना। थोड़ा सा इसको अगर जो लोग हमारे देख रहे हैं उनको अगर बताना चाहें, क्या टेम्परेचर मेंटेन इसको किया जाता है, और ये क्या मतलब आप अगर कोई अपने घर पे इस तरह के माहौल में इसको क्रिएट करना चाहे तो हो सकता है जी। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो स्टेट है, खास करके जो पहाड़ी जिले हैं, 9 जिले हैं, और इनको पहले से ही ब्लेसिंग्स हैं कि जो टेम्परेचर यहाँ देख रहे हैं आप, जो एयर कंडीशनर लगाए हुए हैं, वहाँ ये टेम्परेचर जून में रहता है बिना एसी। इसको हम बिलो 25 डिग्री रखते हैं, 24-25, और बहुत ठंड भी नहीं होनी चाहिए, 18 से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। तो माइल्ड जो पहाड़ों में होता है, जिसमें आप हमको घूमते हैं, सड़क पे किनारे बैठ के गाना गाते हैं, उसी टेम्परेचर में ये भी गाना गाता है। तो कोई इतना इसकी जरूरत नहीं है वहाँ पे, और जरूरत थोड़ा बहुत कहीं होगी भी, इसकी कॉस्ट का रिटर्न इतना हाई है कि अगर आपने कुछ खर्चा भी कर दिया तो तब भी कोई बात नहीं है। पर आई एम स्टिल ऑफ द ओपिनियन कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा वहाँ पे ये स्टूडियो जोड़े जी। आप अच्छे साफ सुथरे, हाँ ये एक बात जरूर है, हाइजीनिक होना चाहिए, उसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो जैसे आप सुन रहे हैं ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इसमें भी लगता है। राइट, तो वो एक ध्यान रखना है, प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, मार्केट अवेलेबल है। फिर मैं पहले कहा था जी कि भाई म्याऊं तो बिल्ली तो हम बना देंगे सोने की जी, म्याऊं तो एंटरप्रेन्योर को करना। थैंक यू काव्य आने के लिए जी, और आप हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर हैं, अनपेड। थैंक यू। और हम हमेशा तो महेंद्र सिंह कुंवर जी इस वक्त मेरे साथ में हैं हार्क से। सर जी, उसमें थोड़ा सा चेंज ट्रांसफर के लिए एजुकेशन स्टेमिना पावर्स को बूस्ट करता है, और प्लस ऐसे ऐसे कंपाउंड्स प्रोसीजर से लेके कैसे इसको मार्केट किया जाएगा, कैसे इसे प्रोड्यूस करा जाएगा,
Thank you. Next, Pradeep. Yeah, total 593 numbers of seminar and conferences have been sanctioned so far. Next, please. 124 number of travel support have been sanctioned till date. Next, please. Yeah, this is one of the important flagship program of the council, which is Uttarakhand State Science and Technology Congress. We have been doing Science Congress continuously since council inception in 2005. It's a yearly event and it is a platform to more than 1,000 young scientists. And we scouted 50 bright and young scientists during this Science Congress. Till date, total participants are 6,835 and total number of awardees 627. We have also awarded Innovator of the Year and 10 numbers of innovators have been awarded. Next, please. Yeah. We also organized Children's Science Congress. Before last year, 2 young students were selected and presented in national level. Next, please. Yeah. Popular lecture series organized by the council time to time. Eminent personality delivered lectures in the council like Professor Amrit, Next, please. Professor Manju Sharma, they have also visited the council and delivered a talk. Next, please. Yeah, we have Professor Lars Blofeld. They have already delivered lecture in different occasions. Next, please. Next, please. Yeah, Padma Bhushan lead Shri Sundala Bhagat and Padma Bhushan Shri Chandu Prasad Mukherjee also delivered a talk in different occasions in the council. We have a local chapter of National Academy of Sciences. As you see in the picture, that Professor M.G.K. Menon and Professor Ian Puri initiated a chapter in 2006. And we have also organized 86th annual session of the National Academy of Sciences here in Dehradun. During Science Congress, we awarded Best Science Teacher from Uttarakhand, and till date, 11 Best Science Teachers awards have been given. We used to organize Nasi plenary lecture by eminent scientists in every Science Congress. Till date, 139 events have been organized in different parts of the state. Next, please. Council has been implementing various projects funded by DST, DBT, MOEFCC, etc. One of the projects is Center of Excellence of Forest-Based Livelihood. This was funded by the Ministry of Environment, Forest and Climate. The total budget of the project was 2.5 crore, and the main objectives was to collect all the available data on forest-based product, conduct socio-economic analysis, and estimate cultural dependence of the forest-based villages in forestry. Next, please. Under this project, we have collected data from 202 sample villages and survey of 38 villages has been done. These are the manuals and publication of this project. Next, please. It just shows the. Yeah, Mishra ji, can you sum up as early as possible because time is shooting up. Okay, next, please. These are routine activities. If you have something very special to highlight, you can highlight that. That's it. One video I want to. Next, please. Next, please. Yeah, one video I want to show you riverbank filtration, how it works. Please show the video.
खूबसूरत नदियों के प्रदेश उत्तराखंड में अब घरों तक पानी की सप्लाई आधुनिक तकनीक से की जाने लगी है। ये तकनीक है RBF यानी रिवर बैंक फिल्ट्रेशन। नदी तट पर पानी जमीन के करीब 30 मीटर तक नीचे छनते हुए पहुंचता है। इसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। श्रीनगर में अलकनंदा नदी तट पर RBF तकनीक का प्रयोग कर ग्राउंड वाटर को सप्लाई करने का काम जल संस्थान ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर ये प्रोडक्शन वेल है। इस प्रोडक्शन वेल को पहले टेस्ट करके देखा जाता है कि कितना गहराई तक जाना है, कितना पानी हमें मिलेगा। उसके बाद प्रोडक्शन वेल बनाने के बाद प्रोडक्शन वेल से पानी पंप किया जाता है। पंपिंग प्लांट इसके अंदर है। इसमें ये इसका अटैचमेंट है जो पंपिंग प्लांट में लगाया जाता है। नॉन रिटर्न वाल्व है। ये वाल्व है एक्चुएटर ऑपरेटेड। ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है। इसमें मानवीय इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है। वो प्रोडक्शन मीटर लगा है। उसके आगे एक मैनुअल वाल लगा रखा है कंट्रोल के लिए। ये तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है। इस तकनीक से पानी में पैथोजेंस तक फिल्टर हो जाते हैं। टर्बिडिटी, pH इत्यादि जो केमिकल पैरामीटर है वो भी कंट्रोल हो जाते हैं। अलकनंदा के बहते जल में मिट्टी, रेत बहुत आसानी से देखी जा सकती है। स्नान के लिए भी प्रयोग करना मुश्किल है, लेकिन इसी RBF साइट पर करीब 30 मीटर नीचे चले जाता है और उसके बाद ये ग्राउंड वाटर 100-200 मीटर तक बहकर RBF साइट तक पहुंचता है। नदी तट पर और उसके नीचे मौजूद रेता, बालू, कंकड़ और पत्थरों के बीच होते हुए ये जल पूरी तरह से छन जाता है। जल का वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद इसकी शुद्धता पर संदेह समाप्त हो जाता है। जाती है। हम 2000 Pradeep, come to the national international linkages. Leave all these running projects. Next. Next. ये पंडित, ये this is about the Pandit Deendayal Yojana, which was inaugurated 3 or 4 years back by the then Honorable Minister Science and Technology Government of India, Dr. Harshvardhan, and our Chief Minister. And 4 clusters were developed in Uttarakhand. As a follow-up, we are adding a couple of clusters also. And we have a great learning working with the people located far-flung areas in the villages. And we have some success stories. At the same time, we have some failures also. As the dairy sector, we had to submit deposit all the money back to the DST. But it's a great learning, and we are extending it to the other parts of the country also. And as far as Uttarakhand is concerned, we are extending it up to the 3 clusters, and 2 are already on. We have already given seed money to these clusters to go ahead with this program. We are extending it. This is all about the Pandit Deendayal Yojana. Go ahead. Next. Yeah. A few things I want to say about this project. This project was funded by NMHS MOEFCC, and one of the most successful project which has around 4,700 beneficiaries. Under this project, 19 products developed from 9 wild fruit and nuts. The project was around 2.5 CR. However, the total profit is 5 CR till date, which is double the project cost. Next, please. Honorable CM of Uttarakhand inaugurated, the brand name is Mountain View, which is online also. Next, please. Yeah, this is the NABL accredited water quality lab, first NABL accredited lab in Uttarakhand, funded by WPI division DST. Total cost was 90,000.
We run this lab with Uttarakhand Jal Sansthan Dehradun. Every month we collect the water samples from 13 districts and analyze in this lab and then feed it on government portal. Have a look on a small video how we work. जल ही जीवन है, सभी को शुद्ध जल उपलब्ध हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। उत्तराखंड में यूकॉस्ट यानी उत्तराखंड स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जल संस्थान के साथ मिलकर केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उत्तराखंड में 39,000 पानी के स्रोत हैं। यूकॉस्ट और जल संस्थान इनकी लगातार निगरानी करता है। टर्बिडिटी और पीएच की जो जांच होती है वो ऑन साइट की जाती है और इसके अलावा जो बहुत सारे फिजिको केमिकल पैरामीटर हैं जिनमें हार्डनेस है, मेटल्स की जांच है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, इनकी जांच हम लोग सैंपल वाटर क्वालिटी के लिए लैब में लाने के बाद करते हैं। कुछ ब्लॉक में आयरन आया है लेकिन आयरन रिमूवल यूनिट लगा के उस समस्या का समाधान किया गया है कि हमें ये पता चल रहा है कि कहाँ वाटर क्वालिटी में कुछ दिक्कत आई है। उत्तराखंड में जल की शुद्धता को परखने के लिए यूकॉस्ट और जल संस्थान ने 24 ब्लॉक्स में 26 मान्यता प्राप्त लैब तैयार की हैं। लैब में लगातार चेक किया जाता है कि प्राकृतिक स्रोतों में फीकल कॉलीफॉर्म जैसा खतरनाक बैक्टीरिया तो नहीं है। ये बैक्टीरिया सीवर के पानी में पाया जाता है और अगर पीने के पानी में ये मिल जाए तो कई खतरनाक बीमारियों को जन्म दे सकता है। लैब में आयरन, नाइट्रेट और सल्फेट सहित कुल 14 हानिकारक धातुओं और केमिकल के परीक्षण की भी सुविधा है। इन लैब्स में कोई भी व्यक्ति या संस्था सिर्फ 1200 रुपए भुगतान करके जल गुणवत्ता का परीक्षण भी करवा सकती है। जल गुणवत्ता की आपके घर पेयजल सप्लाई होने से पहले हम लोग उसकी जांच करते हैं और जांच के बाद जब उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाती है तब वो आप लोगों के घर में पहुंच रहा है। उसमें जो हर एक पैरामीटर के लिए जो सीमा दी गई है, जैसे उदाहरण के तौर पे पीएच 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए, तो वो पानी पेयजल के लिए ठीक है। इसी तरीके से टर्बिडिटी के मानक हैं और सल्फेट, नाइट्रेट और क्लोराइड और रेजिडुअल फ्री क्लोरीन, बहुत सारे पैरामीटर हैं। टोटल कॉलीफॉर्म, फीकल कॉलीफॉर्म एब्सेंट होना चाहिए यानी कि अनुपस्थित होना चाहिए। इन लैब में तैनात कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि हर तकनीक की जानकारी मिल सके। भविष्य में यूकॉस्ट और जल संस्थान का लक्ष्य ऐसी विशिष्ट प्रयोगशालाएं राज्य के सभी 95 ब्लॉक्स में तैयार करने का है। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि प्रदेश के सभी प्राकृतिक स्रोतों की निगरानी को और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा और सभी को शुद्ध जल भी उपलब्ध हो सकेगा। Thank you. In nutshell, we can say that Council has done tremendous work in the state within 15-16 years only. We have reached out to the common masses through different technology intervention. For these words, I want to thank you all. Thank you. Thank you, Dr. Mishra, for giving an overview of council activities and what all we are doing with line department. Now, I may request Dr. Kashyap, Dr. S.K. Kashyap sir, who is a dean from GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. As you know that GB Pant University is a premier institute located in Uttarakhand and is one of the oldest institution in our country. So I request Dr. Kashyap for his address, please. Thank you. Thank you, Dr. Hon'ble Sahab. Dr. Rajendra Dobhal Sahab, Director General, UCOST, all the eminent dignitaries, those who are there from all across. It's a pride pleasure for me to represent GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, on behalf of our Honorable Vice Chancellor, Dr. Tej Pratap ji, and to put up in brief the case of GB Pant University as an apostle of agricultural research and development that has made tremendous impact in last 6 decades across into the country. So basically, when we look towards GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, and we align it with the development of the nation, especially in context of agriculture and rural development, one thing that emerges, very vibrantly that emerges is that when country was striving for self-sustenance in food grains at that point of time, and when we were envisaging actually how actually
agricultural researchers should shape up into the country to give the solution to this big challenge. At that point of time, the Radhakrishnan Commission or the Education Commission led by Dr. Radhakrishnan ji, it proposed to come up with agricultural universities or rural universities into Indian context, and Pantnagar University has the pride to emerge as the first agricultural university of the country, which was based on land grant pattern. This land grant pattern envisaging three mandates together, working together, the teaching, the research, and the extension work. And when we look towards the words of the first Vice Chancellor who joined into this university in 1960, Dr. Stevenson, and he talks about the mandate of Pantnagar. He very emphatically says that this university has a base of research, that is generation of knowledge set, and then teaching, and then extension, that is generation of knowledge, dissemination of knowledge, and then bringing up the talents who would be carrying this teaching and research ahead. So this university is basically a research-based university with a vibrant team of researchers from all across, multidisciplinary team, basic sciences, agricultural engineering and other segments, veterinary sciences, community sciences, and of course agriculture. Talking about agriculture, as we talk about, it goes into agronomy, horticulture, plant pathology, entomology, food technology, agrometeorology, means 11 segments, agricultural extension and all. So it's multidisciplinarity across to work upon multiple research segments. This is what has been the prime focus of G.B. Pant University of Agriculture and Technology since inception. And we have the pride to come up with more than 300 improved varieties. That was the biggest demand of the country to come up into agricultural production. So more than 300 improved varieties of seeds, and those improved varieties, of course, we understand varietal release means it takes lots of toil, but committed team of researchers across into the country have been, even this year we have come up with 14 new varieties. In between the pandemic, the game was going, we didn't stop. So prior to getting ahead into, I just want to show you a glimpse of a small teaser, a small film that shows, it is 2-3 minutes only. So into that 2-3 minutes, just to show you into brief how actually Pantnagar operates, please. छोटा 2-3 minutes. Volume. An all-inclusive strategic transformation evolved at G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, facilitated by the World Bank-funded project of ICAR, Institutional Development Plan of National Agricultural Higher Education Project, which led the university rise to the call of disastrous pandemic. Total 54 classrooms upgraded to digital classrooms equipped with advanced interactive digital panels and dedicated internet support. All 400 plus faculty members and administrative staff, 4,000 plus students were provided Microsoft 365 dedicated license to create a uniform online teaching platform. The IDP NAHEP effort could support the university to adhere to the academic calendar day by day, including final exams in online mode. On the other hand, 8 teams of 100 plus faculty members worked incessantly for higher order cognitive skills of UG students and organized 99 trainings this year involving 125 external experts and 47 experts from overseas leading institutes.
The IDP foreign language component led A1 and A2 level of certificate courses of French and German language round the year with 322 certified students. A record of 1200 hours of IDP remedial classes with the involvement of 65 illustrious alumni to enhance basic understanding in the subjects and to equip the students for competitive exams. The IDP internship Pathshala was yet another very popular innovation. 6 internships were organized with 90 selected beneficiaries. Infrastructure-wise, the unique virtual classroom with virtual reality and 3D viewing facility became functional. The Innovation and Incubation Center harbored 12 incubating teams. The e-content studio, the AI and robotics lab, the faculty development center supported by ICAR NARM conducted series of important events including the university convocation. The IDP e-content team developed 500 modules of different UG courses. In respect of environmental and social safeguard concerns, the campus got ramps, LED lights, road barriers and convex mirrors, green toilets, plantations and upkeeping a tree register, sanitary napkin vending machines, composting unit, water harvesting units, CCTV cameras and solar panels during this entire year. The IDP Nahib Pantnagar, it is a call for excellence through global exposure, industry attachment, alumni network and internal reforms. It is also about upbringing and innovation-based ecosystem for entrepreneurship development. An all-inclusive strategic. Briefly, showing the institutional development plan that we created into Pantnagar University as the pandemic entered across into the university. So we leaped into a new era to keep the studies going and to keep the research going across into the university. That was the point when Pantnagar decided to get into smart classrooms across into all undergraduate classes. And 65 rooms were selected across into the university, all translated into smart classroom with digital facilities, and it could make the teaching thing going on. For research equally into different disciplines, it went on continuously, that I said, leading up to the varietal release and other programs that were continuously going. And the innovations into education and academic management that we incorporated into last 1-2 years that I showed into this video, that was an outcome of the efforts made during this pandemic. When world was put to halt, we were trying to translocate our focus towards those aspects which would be helping Pantnagar evolve as a premier institution across and to bring up best of the facilities across so that students don't get at halt even for a single second. And that made this university come up not even a single day of loss of studies across internet facility, across Microsoft Team facility on which classes, online classes came up, across capacity building of faculty members for online pedagogical approaches and nurturing faculty members through hundreds of hours put into that so that really it emerges up to the expectations. So this is where actually we emerged, and that has made us feel pride that today when we are looking towards the university after these 2 years, 2 vulnerable years, we can say that the whole batches have come out. The students have been put to higher education segments and sectors. They have been put to placements and employments across. And this is where actually we together have made our students emerge. So looking into all these facets, what I say is Pantnagar University with focus on agricultural research, education and teaching right from beginning. And when I look towards Pantnagar University at present, I see more than 600 faculty members, more than 600 vibrant scientists who are there across into the disciplines, into a system of interdisciplinarity and convergence, bringing up best possible researches, going through the university, through multiple research centers that are located into the university campus as crop research center,
Livestock Research Center, Poultry Research Center, Mushroom Research and Training Center, Fisheries Research Center, Medicinal Plants Research Center, Floriculture, Model Floriculture Center, Horticulture Research Center, Vegetable Research Center. So there are 14 such research centers. All research centers dealt with multidisciplinary teams, and then into all those 13 Krishi Vigyan Kendras which are located across into the Uttarakhand, 9 KVKs being led by Pantnagar University for Uttarakhand for the rural development across into Uttarakhand hills and plains, and then the teaching thing that is emerging with vibrant outcomes and results. One very vibrant thing that I want to share at this point of time, under leadership of our Vice Chancellor Dr. Tej Pratap ji, who has been Vice Chancellor for 4 tenures earlier to joining Pantnagar University, that last year only, when we were completing 60 years, ICAR gives or declares one institution across from the country as Best Institution of the Year, and that is Dr. Sardar Vallabhbhai Patel Best Institution Award. Last year, while we were completing 60 years, we were declared as the best institution from ICAR side, GB Pant University of Agriculture and Technology. So 6 decades crossed, and after 6 decades also, Pantnagar could prove its birth through the contributions and through the achievement that Pantnagar is coming up with, and that led to this Sardar Vallabhbhai Patel Award of ICAR as best institution after 1960, 60 years 2020, and we were declared on that point, that segment. So the achievement that is there from Pantnagar side, especially in context of research publications, in context of rural development efforts, in context of entrepreneurship development, it is re-envisaged, refocused through this institutional development plan. This institutional development plan provided this Pantnagar University to revisit the 60 years of efforts and then revisit the efforts to get into academic transformation. So going towards that academic transformation, once again, Pantnagar could think in terms of virtual classroom that Pantnagar University came up with AR, VR facilities, augmented reality, virtual reality, and 3D facilities. Then Innovation Incubation Center, one new unit added to Pantnagar University. That Innovation Incubation Center is a point where students and faculty members of Pantnagar University get a chance to merge with their views and ideas and to work upon that in alignment with industry partners. That was one aspect that was missing and we could come up with. The Faculty Development Center is yet another point which has been sponsored by Indian Council of Agricultural Research, NARAM, from Hyderabad. And this Faculty Development Center is a point to nurture the faculty members into National Agricultural Research System from across the country. People would be coming and getting nurtured across, especially into educational technology and pedagogical approaches, aligning with educational excellence. So this FDC has been bestowed upon to Pantnagar University to run FDC from Indian Council of Agricultural Research. That also becomes one thing. And one vibrant idea that emerged as UCOST is coming up with this very good, vibrant program today. This program is about Amrit Mahotsav of this whole country. 75 वर्ष स्वतंत्रता के, और स्वतंत्रता के 75 वर्ष उपरांत जब ये देश अपने आजादी के 75 वर्षों के बाद अपनी उपलब्धियों को देखता है, तो उसके बाद जो गौरव की अनुभूति होती है, उस गौरव की अनुभूति का जश्न अपने इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो मना रहा है देश, उसी क्रम में पंतनगर विश्वविद्यालय ने भी सोचा कि इन अपने 60 वर्षों के समस्त उपलब्धियों को, विशेष करके इन 60 वर्षों की अपनी विकास यात्रा को संरक्षित करते हुए एक म्यूजियम बनाए। और ये अपने आप में एक अभिनव कॉन्सेप्ट था कि एक म्यूजियम बनाया जाए। पंतनगर विश्वविद्यालय अब उस म्यूजियम को बनाने में जुटा हुआ है और उस म्यूजियम का 80% कार्य लगभग हो चुका है, जहां पंतनगर विश्वविद्यालय अपने 60 वर्ष की समस्त उपलब्धियों को साथ लेता हुआ और 60 वर्ष की विकास यात्रा को इकट्ठा करता हुआ एक पंतनगर म्यूजियम बना रहा है, जो भारत के कृषि शिक्षा के विकास की यात्रा को परिलक्षित करेगा, ऐसा एक म्यूजियम बनने की दिशा में। So that also becomes one of the aspect where Pantnagar University is trying to bring up, document the acumen that has been done into agricultural education segment, agricultural education research across into the country to come up into this museum segment. So that also is one of the aspects. So at this point of time, when I have this opportunity to talk about
this university, Pantnagar, in front of very illustrious dignitaries. Before putting my case to rest, I just want to re-emphasize one thing, that is going across into the world, talking about this rankings, lots of ranking that has emerged. Even ICI is coming up with ranking. But looking into the mandate of Agricultural University as Pantnagar, looking into the thrust of rural development of the country, and looking into the thrust of agricultural researches across into the country, many of the aspects which are not covered under ranking. But of course, it becomes the biggest strength of GB Pant University when we come up with those mandates of agricultural evolutionary technologies on which Pantnagar should emphasize upon. And Pantnagar focusing on breeder seed production on mass scale through the land that Pantnagar has, especially into wheat and even other crops. Into wheat, we still have the pride to produce about 10% to 15% of total demand of the country coming up, breeder seeds demand of the country coming up from Pantnagar. So this breeder seed production, varietal releases, improvised technologies becomes the focus of Pantnagar, on which we are incessantly working across. And we hope that with the insights and invigorations, with very vibrant units and institutions like UCOST, we are emerging. We have the pride of working along with UCOST at different platforms, and we would be taking it as an opportunity ahead also to work with UCOST, to work for the cause of the state and broader cause of the nation as well. Thank you very much. I feel I must be restricting because it's a big story, but looking into the plethora of very eminent speakers, those who would be putting up their institutions as well, I concise my case into these words. Thank you very much. Thank you very much, Professor Kashyap. You have given an insight of GB Pant University, elaborated know-how about the GB Pant University. It's a first university of its own kind in our country, and UCOST is very closely associated with the university. We have done a number of programs with university, and including our prestigious Science Congress there. So we are looking forward for more collaboration with you. Thank you very much, Professor Kashyap. Now I request Dr. Prakash Chauhan sir, Director, Indian Institute of Remote Sensing, Department of Space, Government of India. And this institute also impart many courses, including MTech, PhD programs, certificate courses, diploma in the field of remote sensing and GIS. And Professor Chauhan is a well-known science communicator also, and UCOST and IRS is very closely associated and doing many programs together. So I request Professor Chauhan sir for his address. धन्यवाद डॉक्टर उनियाल साहब। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के उत्सव पर जब हम अपनी आज़ादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की तरफ से डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी का और आज इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया और आपके समक्ष हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग और इसके अलावा हमारे कैंपस में एक यूनाइटेड नेशंस एफिलिएटेड इंटरनेशनल सेंटर भी है, जिसको हम सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक सेस्टेप के नाम से जानते हैं। सो इन दोनों केंद्रों की गतिविधियों के बारे में आपके समक्ष मैं अपने विचार और गतिविधियों को प्रस्तुत करने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप आज हम सब उत्तराखंड के साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इसी क्रम में मैं आपको IRS देहरादून और सेस्टेप की गतिविधियों के बारे में बताना चाहूंगा। और जैसा कि उनियाल जी ने बताया कि IRS देहरादून जो है वो रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स के क्षेत्र में एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, जो कि ट्रेनिंग, एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है। सो आवर मैंडेट
is basically to build capacity through training, education, and research in the field of remote sensing, geographic information system, GIS technology, and the applications of this technology for the societal benefit. Our motto is to provide education for acquiring knowledge and translating this into practical applications for solving real-world problems. IRS is one of the central education institutions of excellence which has been recognized by the Act of Parliament of 2006. And this institution is now in service of the nation for more than 50 years or so. In fact, it was instituted here in Dehradun way back in 1966. Initially, it was known as Institute of Photo Interpretation, and it was under Survey of India. But later on, it got into the into the bigger umbrella of Indian Space Research Organization. So today, it's a unit of Indian Space Research Organization in this part of our Uttarakhand. Now, as far as the activity of the institutes are concerned, as I told you, we are in 4 different verticals: training, education, research activity, as well as the outreach activity. So we provide host of training programs like PG diploma programs, certificate courses, teachers training program, as well as international activities under Ministry of External Affairs, India Technical Economic Cooperation activity. We also do a lot of customized courses for various institutions in India, as well as for various countries, depending on their request. And this particular campus also hosts a Center for Space Science and Technology Education Center in Asia and Pacific, which is also called STEEP. I will talk about the activities of the STEEP also. We have the MTech program, MSc and PhD activities for the students as well as for government officers. We also carry out large amount of R&D activities, especially in the use of satellite-based remote sensing technology for sustainable development. We have sponsored projects for Department of Space, from various other user projects from different ministries of Government of India, including the state governments like Uttarakhand government, Ladakh Union Territory, and many other, Himalayan states. They are coming up with the specific problems to us as far as the R&D is concerned. We also do a lot of in-house techniques and technique development projects, especially now with newer technologies like hyperspectral remote sensing, LiDAR technology, use of UAV and drones for remote sensing related applications. And then, of course, large amount of work is also done by Institute in terms of outreach to the common public, and to also spread awareness about the use of space for societal applications. Now, just to give you a brief about the training activities, we have this postgraduate diploma program, which is a very long-standing program of the Institute. Basically, it was designed for the government institutions and the officers of different ministries of central and state governments. It is a one-year program with 10 different specializations. And then we also have the certificate courses, especially meant for university faculty and government staff for 8-week duration. Then, of course, as I told you, for international participants also, we have the short-term programs. We have a 1-week program for decision makers. That means the top-notch people, especially those who are at the helm of affairs of various institutions. There are programs to apprise them about the use of this technology. Then special tailor-made courses are also done for various user departments. We run an MTech course, which is a 2-year course and affiliated to Andhra University on the remote sensing and GIS. Almost 60 students every year are inducted into this particular course. We also have a flagship program with the University of Twente. Earlier it was known as ITC Netherlands, and we provide MSc degree in geoinformation science and earth observation. We also are doing a lot of activity nowadays, especially in COVID times, through our live and interactive courses on our e-learning platform. And a large number of institutions in India, more than 2,000 academic as well as the R&D institutions in India are connected to us, and they receive our live and interactive program through this. Earlier we used to call it EduSec program, but now it is being done through internet connectivity. And of course, large amount of PhD students are there in the campus. They are also sponsored by different agencies like DST, CSIR, as well as the students which are getting funding from the Department of Space.
As far as the international training activities are concerned, we do provide large amount of training to participants coming from the developing countries in Asia and the South American region, as well as from the Southeast Asia. We have for Asia Pacific region under STEEP PG diploma and short-term courses, as well as under ASEAN India Space Cooperation Program. Also, large amount of participants are visiting in our institutions. And we also have done a lot of customized courses for many countries, including Bangladesh, Tajikistan, and some other neighboring countries in this region. So, just to give you a snapshot of the level of geospatial training and education activity, three major verticals you can see here. One is training program for decision makers and senior functionaries, training program for middle and working level professionals, and then of course training program for the entry level students as well as the professionals who are entering into the government or into the private sector, or even for NGO, or even we have programs for school teachers also. I'll not go into details of each of these activities, but our training calendar is more than full for the entire year, and we are trying to cater for the various segments of the society in terms of providing information and training for use of space technology, in particular remote sensing, GIS, and navigation technology to the communities. So, as I told you, we are also doing specialized and customized course for various central and state government departments, especially for Ministry of Agriculture, Farmer Welfare, Ministry of Environment, Forest, Climate Change, Human Resource Development, and various other ministries, because as many of you are aware, today the space technology is being used in virtually all aspects of the e-governance processes, as well as to understand the various issues and aspects related to climate change, as well as for disaster risk reduction. So almost more than 50 ministries are in touch with us in the central government, and a lot of other departments of various states also are getting their training needs fulfilled through IIRS and STEAM. We also give training courses in the emerging technology field, like hyperspectral remote sensing, microwave, UAV remote sensing, and their applications for citizen science, atmospheric remote sensing, urban floods, health GIS, open source GIS technologies, and then of course the LiDAR technologies, which are also becoming very popular in terms of mapping the land surfaces. As I was telling, we have this distance learning studio in IRS, a very popular activity. And today we have more than 2,700 network institutions all across the country. You can see the distribution of these network institutions. And then all the e-content, and especially it has become more relevant in the COVID times, because most of our in-person trainings have also moved on to the digital platform. And as I can show you that last year, till now, more than 3 lakh persons have got benefited from this. And we also have the live e-content on our portals. And we are also developing newer technologies like massive open online contents, which recently we launched a MOOC program with UNUSA, and more than 27,000 participants participated on this disaster management related MOOC. Of course, we also get engaged with defense officials, Army and Navy, Air Force people. And in that scenario, also a lot of people are getting benefited from IRS activities. Now, as far as the STEEP activity is concerned, this center was brought to India almost 25 years back with the visionary leadership of Indian Space Research Organization, Professor Kasturirangan. And since then, in the Asia Pacific region, this center is playing a very important role in terms of developing capacity to use the space technology, especially in Central Asian countries and the East Asian countries like Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Myanmar, and many other, alumni are there in Vietnam and Thailand in those regions. I'll not go into details of this, but the activities of this center are run because the SESTEP headquarters is in Dehradun, so we predominantly run this thing from Dehradun. But we have our host institutions at IRS Dehradun, Space Application Center Ahmedabad, ISRO Satellite Center Bangalore, Physical Research Laboratory in Ahmedabad. So we have courses on remote sensing and GIS
satellite communication, satellite meteorology and global climate, space and atmospheric science, and global navigation satellite system. So a host of satellite technologies are covered by the help of various other ISRO constituent organizations spread over the country as far as the training for the Asia Pacific participants is concerned. And of course, I would like to tell here that Indian participants are also participating in large number for our STEEP activities. So we have these education programs like PG Diploma in Remote Sensing and GIS, PG Diploma in Satellite Communication, Global Navigation and Satellite Systems, Satellite Meteorology, Space Science and Atmospheric Sciences, and short courses on small satellite missions and user demand-driven projects. So this center has a very good international outreach, and a lot of eminent personalities. Here I show you a picture of Dr. Kalam, who participated in the valedictory function in 2004. So this puts Dehradun on international map as well, and large amount of international traffic, especially those who are dealing with space technology, do come to Dehradun and Uttarakhand. So I feel that I feel honored that we have the STEEP headquarters at Dehradun, and this must be known in Uttarakhand that we have such an international center here in this state. Now, as far as the countrywide participation, this is our, the countries where a lot of people are coming in Asia Pacific region, and more than 2,600 participants have got benefited from more than 61 countries of Asia Pacific region as far as the training and capacity building activities are concerned. We are also doing large amount of work in terms of capacity building of various organizations and disaster risk reduction. As you know that with the changing climates, the disaster risks are increasing, and as you must have seen, varieties of disasters have struck in Uttarakhand. So I think this is an area where IRS is playing a good role as far as the interacting with various social organizations and the SNT organizations in this state as well as in the state of Uttarakhand. I will show you some of the other R&D activities very quickly. We are keeping an eye on Uttarakhand especially and other Himalayan states from space. And this is a beautiful image recently acquired during the Kumbh at Haridwar, and from a very high resolution satellite data, which is less than 50 centimeters or so. And such type of data is being used for varieties of applications, not only monitoring, but also for urban planning and also disaster risk recovery kind of activities. Just to give you some brief about this Chamoli event, this event globally have been under attention because it's a kind of a unique disaster which has happened in a season which is not typically known for disasters. So just with a couple of slides, I would like to show that what we could see from remote sensing data. So this is the zone of activity, the theater of activity at a glacier called Ronti Glacier, north of Joshimath. And at this location on 7th of February, this rock slide has happened, which has basically caused this particular, event because the amount of mass was so high, which is basically spread over around 0.3 square kilometer, and this mass basically fell down around 1,700 meters and produced large amount of frictional energy and melted a lot of, the ice which was there at the terminus of this Ronti Glacier, and suddenly a large amount of water was released into this narrow gorge, which caused this flash flood. So this is an overall setting of this area. And then I will show you that how this event, before the event, the satellite images shows you that this area was covered by thick ice, and suddenly on 7th February, this landslide or rock slide took place, and such a large area got disturbed. And these are some of the estimates that we could estimate that around 150 meters of thick ice and debris volume encompassing around 0.5 kilometers as well as around 1 kilometer area. This much of rock and ice slide happened, and that material has fallen down at this location, causing this sudden release of water. So we also did a lot of field work with the help of Indian Air Force, and you could see the same phenomena was captured by the ground-based observations also, which what we could see from space. So this is how this Ronti Glacier looked like. So the mass which basically came
from such a large height. Essentially, it basically strike this glacier at this location, and you could see that an impact crater of around 50 meter depth was created into this dead ice of the Ronti glacier, and this impact zone you could see, so which is around 50 meter in depth and then around more than 80 meters in width. So such a huge rock mass basically immediately got melted because of the kind of kinetic energy which was available through this rock slide, and that is what created this huge amount of water, which instantly created this flash flood in this region. And here I show you the satellite image before the event. This is the mountain, forest systems in red color, and you could see that most of this forest was devastated because almost up to 150 meters or so, the water level has risen in this narrow gorge, and large amount of debris also got deposited. And this is the mouth of Rishiganga river, and at this Rishiganga river, this sludge was so high, around 15 to 20 meter, that it blocked the main river channel, and an artificial lake was created at this region. And of course, the devastation but these are some of the images which are captured from space, telling you the entire story of this event. So this is the kind of work which we do, and immediately we help the state government in understanding the entire process. In fact, next day itself, I could brief to the Chief Minister, Shri Rawatji, Triveni Singh Rawatji, about this event, because by the evening we acquired all the satellite data. We triggered the international charter, where all satellite operators of the world, they start pooling their resources at the location of disaster, and that's how we could decipher this thing. We are also keeping an eye on the glaciers of Uttarakhand and assessing that what has been happening, because most of these fragile ecosystems, they are responsible for providing water to our mighty rivers, especially the Gangotri glacier. What you see over here is a beautiful animation where you can see the glacier is moving with certain velocity, and here it terminates where the river originates. This is the Gomukh area, and at this Gomukh, many other activities are also happening. Especially in 2017, there was a landslide, and we are monitoring the snout of Gomukh glacier and seeing the upward movement of this glacier, almost 900 meters or so it has retracted. So these are the kind of activities which, in terms of research, we are doing. We are also visualizing these terrains using our high resolution satellite data. So here I thought I will give you a quick Char Dham darshan to all of you. It's a virtual darshan. So as you go into the Gangotri Valley, this is the river, Bhagirathi river, and then you come at Gomukh, and then you go over to the Gangotri glacier, which is going to be a very difficult task, but through satellite images you can see that as if you are taking a helicopter sortie. And this is how the Gangotri glacier looks like. At the lower region, the ice is dirty because of the large amount of mass and the debris which basically gets covers this ice. But as you go to the higher altitudes, you start seeing the fresh ice. And then, the other side of the Gangotri glacier is the Kedar Valley. And wait for a minute, then you will be into the Kedar Valley. Yeah, so this is the Kedar Valley, and here you see in this valley the Kedarnath temple over here, just lying below on these two mighty glacial systems. And then on the third side of it is the Satopant glacier, where basically when the glacier terminates, you come across Badrinath. So using this type of high quality digital elevation information which we get from the satellite observation and combining with the satellite data, we are able to recreate the three-dimensional models of all the entire Himalayan terrain in Uttarakhand state. And at the time of disasters, it becomes very easy for us to monitor that what really is happening in Uttarakhand at different places. So this is the Satopant glacier. You come over here and then you have this Mana village, and then of course the Badrinath area in this region. So the purpose of showing this visualization is to give you an idea that how using these advanced technologies today, we are able to visualize this tough terrain, which if you, many of you must have visited, you must be knowing that how difficult it is. But with these worlds or the satellites which are operating in the space,
it is really easy to visualize some of these changes which are happening. And another important aspect which is happening in Himalaya is that many of these glacial lakes are expanding rapidly. So this is a Imja group of glacier in the eastern Nepal region, and you can see that through this rapid visualization, how I show you that expansion of these glacial lakes. So we have created an atlas of glacial lakes of Uttarakhand. This beautiful book also summarizes that how many glacial lakes are there, what is happening with these glacial lakes over a period of time, and using this inventory, we are also keeping a track that how these glacial lakes are behaving in time. We are also doing a lot of work for Uttarakhand states using our advanced tools. So we have this an autonomous eco boat integrated with GPS. So using this boat, we have done a bathymetry survey on the request of Nainital district magistrate and created this entire bottom topography of this Naini lake, which is now being used for managing this Naini lake in a proper manner, because there's a lot of issues of siltation and other eutrophication is happening in this lake. So now they have this baseline data, and using this baseline data, proper management of this lake is now being envisaged by the Uttarakhand state. We are also providing a lot of information about the forest fire. This is the forest fire scenario of Uttarakhand in 2021. As you know, this year was a very dry year, extensive forest fires. So using space technology, we are in a position to see the live, the forest fires also. We are also counting them and providing almost near real-time information to Forest Survey of India and to the Forest Department here in Uttarakhand, so that they can do mitigation and management. Using UAVs use is enhancing nowadays, and using this UAVs and drones, we are all now able to do very high resolution topographic mapping. This is the case for Valianala in Nainital, where this landslide zone is there. We have mapped and provided 20 centimeter contours to the state, to the district administration using the drone-based surveys. We are also helping a lot of social work is being done with the help of advanced technologies like our resistivity surveys and satellite remote sensing is being combined to provide information to groundwater targeting, especially to schools in the hilly region. So this is a story of a school in Mussoorie. They were struggling to get the groundwater potential. So we conducted resistivity survey and then also identified structures where water accumulation can happen, because the groundwater is a real problem in hill region, and did this type of a resistivity survey and found out a very conducive reservoir. And of course, the school people were also very happy that they could get at that location good amount of groundwater, which solved their problems. So a couple of schools we have done this work of, and if some more people are interested, we will be happy to do this work for them, of course, without charging any money. Apart from this, looking at Earth, we are also looking at IIRS now, our celestial name, Mars. These are the beautiful images captured by India's Mars mission. This is how the Mars looks like when you go closer to it. This is called red planet. So it's not truly red, it is orangish color. It also has polar caps in the northern and the southern region. This is the largest volcanic complex on Mars. It is 3 times larger than Mount Everest. It's called Olympus Mons. And of course, this is the lunar terrain, which we are able to visualize in 3 dimensions at the Institute of Remote Sensing. And recently, you must have come across about detection of water on the moon using our Chandrayaan-2 mission. And I am happy to say that that work was done at IIRS Dehradun, here in Dehradun and in Uttarakhand, which has got highlights of international press as well as national media. You could see it's a lot of media stories and a lot of science journalists reporting about this important scientific discovery about the lunar water. We have a lot of research facility apart from satellite data, ground-based measurement systems. I will not go into details of that. And then a lot of institutional linkages across Uttarakhand as well as across the country. So I welcome any future collaboration, especially because the SNT meet and many other organizations are present, that if they are interested in taking up any of these activities, which I just described, you are most welcome, and thank you very much. Thank you, Bunyal sir and Dobhal sir. Thank you very much, sir, for elaborative presentation
on IARS, and our scientists very rightly says that India take pride of space technology across and is a leading in globe. Lot many international programs our space department is taking up globally. You have very rightly said that for quick decision making, remote sensing and GIS technology is very effective, and you have shown lot many case studies of glacier monitoring in Uttarakhand as well as flash flood. And आपने चार धाम की भी यात्रा हम सभी को करवाई और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैपेसिटी बिल्डिंग IIR is doing, and sir, we are looking forward for more collaboration with IARS, and we like to thank from Department of Science and Technology, Government of Uttarakhand, and Department of Science and Technology, Government of India. Thank you very much, sir, for your time. Now I may request Dr. Anjan Ray, sir, Director, Indian Institute of Petroleum, CSIR Lab, Dehradun. Anjan Ray, sir, is a well-known chemist at the globe, and he is a very good science communicator. He speaks very well in Hindi and English, and he will be telling more about the initiation of Indian Institute of Petroleum. Yesterday only we were in this institute, and our DG sir and Dr. Ranjan Ray inaugurated a workshop on COVID, basically training the human capacity building on COVID issues. So with these words, I welcome Anjan Ray sir for his address, please. Dr. Ray sir. नमस्कार, सम्मिलित सबको मेरी ओर से हिमालयन दिवस का हार्दिक अभिनंदन। एंड मैंने सोचा कि क्योंकि आज की जो बात है ये नवोन्मेष की बात है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो मैं एक छोटी सी प्रस्तुति रखना चाहूंगा that I will just share on the screen. Please give me a moment. I hope you are all able to see this. आपको स्पष्ट दिख रहा है ना? Yes sir. And आवाज भी ठीक आ रही है? जी सर। जी। तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे इस हिमालयन राज्य में IIP का जो योगदान है वो 60 साल से है और काफी महत्वपूर्ण है, हम ये सोचते हैं। ये CSIR जो दिल्ली में केंद्रित है, हमारे 37 प्रयोगशालाएं हैं, उसमें से IIP एक है, और हम लगभग 350 कर्मी, जिसमें से 75 से ज्यादा PhD प्राप्त हैं, उनको लेके संस्थान संगठित है। अपना जो काम है वो सिर्फ पेट्रोलियम नहीं, पर सारे ईंधन और सारे ऊर्जा के विकल्प को लेके भी काम चलता है इधर। और हमारा जो एक खासियत है, हम लोग जो हमारे राज्य के साथ, यूकोस्ट के साथ, हमारे ग्रासरूट्स लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे काफी काम करते हैं। हमारे टेक्नोलॉजी देश के कोने कोने में फैल चुके हैं। 23 रिफाइनरी में से 20 रिफाइनरी में हमारे टेक्नोलॉजी जा चुके हैं। और इसके अलावा जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में हमारे 50 गुरभट्टी लग चुके हैं, ऐसी कई टेक्नोलॉजियां हैं जो गांव-गांव में भी हमारे जा रहे हैं। इसमें से एक खास महत्वपूर्ण है कि जैसे अपशिष्ट खाद्य तेल, इसको लेकर हम लोगों ने ये गांव-गांव में बायोडीजल प्रकल्प चलाया है FSSAI के सौजन्य से, और हमारे देहरादून में स्थित NGO पार्टनर हैं SDC फाउंडेशन, उनको लेके हम लोग हलवाई और होटल और कैंटीन और कैंटोनमेंट सबसे हम जो है अपशिष्ट खाद्य तेल लेते हैं और उससे बायोडीजल बनता है। ये बायोडीजल डीजल जनरेटर या ट्रैक्टर वगैरह में काम आता है। तो मैं सम्मिलित सबको प्रोत्साहित करूंगा कि हमारे साथ योगदान दें, चाहे विज्ञान धाम हो या चाहे जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। अभी हमारे एक बहुत ही प्रेरणात्मक भाषण डॉक्टर SK कश्यप ने दिया जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर से। सब जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और इससे हमारे भारत में डीजल की लागत और क्रूड ऑयल की आमदनी कम हो सकती है। ये जैसे गांव-गांव में बायोडीजल है, इसका
बहुत सिंपल एक मशीन होता है, बिना कोई ट्रेनिंग का हम लोग एक दिन की ट्रेनिंग से गांव के किसी को भी हम सिखा सकते हैं कि अपने गांव में कैसे बायोडीजल बना सकते हैं। बायोजेट फ्यूल का आप लोगों को थोड़ा बहुत मालूम ऑलरेडी है, और अभी भी हम लोग हर महीने ईंधन प्रस्तुत करते हैं और इसको हम भारतीय वायुसेना को देते हैं, तो उनके हवाई जहाज इससे उड़ते हैं। प्लास्टिक वेस्ट, जो 15 प्लास्टिक बैंक हमारे ऑलरेडी लग चुके हैं देहरादून के आसपास, एम्स ऋषिकेश में भी। आपको मालूम है कि ई कॉमर्स बढ़ गया है ये लॉकडाउन के वास्ते, और महामारी के समय में हम लोग इसको कलेक्ट करके ये प्लास्टिक बैंक्स में कलेक्ट करते हैं। उसके प्लास्टिक दाने बनते हैं हमारे इधर, और वो दानों से डीजल तो बन ही जाता है, पर वो दानों से हम डोईवाला में सिपेट के साथ हाथ मिलाकर उससे बाल्टी, मग्गा, प्लास्टिक के सामान बना सकते हैं आसानी से। तो जैसे असम या छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वैसा ही हम चाहें उत्तराखंड में भी और ज्यादा होए, हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि प्लास्टिक को लेकर, प्लास्टिक देकर उनको कुछ मिल जाए, फूड कूपन मिल जाए, जोमेटो का कुछ टोकन डिस्काउंट मिल जाए, ताकि प्लास्टिक जो है कचरे डब्बे में पहुंचे ही ना, उससे पहले हम रोक लें और उसको हम संसाधन बनाएं। इससे टाइल्स बन सकते हैं, रास्ते बन रहे हैं, और डीजल का तो मैंने बताई ऑलरेडी। इसी तरीके से जो हमारा गीला कचरा है, जो जैसे IMA देहरादून में या LBS एकेडमी में दैनिक 1000 किलो 2000 किलो के कचरा बनता है, उस कचरे से हम बायोगैस बना के, उस बायोगैस से नेचुरल गैस बना के रसोई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली उत्पादन में भी काम कर सकते हैं। इसमें हम एक खास चीज बना रहे हैं IIP के अंदर ही, जिसको हम कहते हैं बायो विश टर्बाइन, जिसमें बायो, सोलर और विंड मिला के हम लोग ऊर्जा उत्पादन करेंगे। तो जब रोशनी रहेगी तो सोलर चलेगा, जब हवा चलेगी तो विंड चलेगा, और जब कोई कुछ भी ना चलेगी तो हम ये बायो यूनिट से पावर प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जो हमारा एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे हैं हमारे, उसमें से हमारे 3 मेंबर दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उसमें से 3 मेंबर यहाँ उत्तराखंड में स्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और लगभग 80 से ज्यादा PhD स्टूडेंट हमारे संस्था में हैं। उस तौर पर तो छोटी संस्थान है, पंतनगर यूनिवर्सिटी या UPS के हिसाब से हम गिन नहीं सकते, परंतु हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज हैं उसके साथ हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम, सालाना लॉकडाउन के टाइम में ही अभी 150 पार्टिसिपेंट हम इस साल पूरा करेंगे, और रिसर्च पेपर हमारे निकलते रहेंगे। इस साल हमारा जो इम्पैक्ट फैक्टर है 6 से ऊपर बढ़ चुका है, और हमारे साइंटिस्ट्स की साइटेशन जो है काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो रहा है जिससे लोग इसको साइट करें। पैटेंट्स में भी हम लोग काफी अग्रणी हैं, और इस साल 14 पैटेंट ग्रांट हो चुके हैं। उम्मीद रखता हूं कि ये जो संख्या बढ़ती जाएगी, और पैटेंट की संख्या ही सिर्फ काफी नहीं है, पैटेंट का क्या उपयोग है वो जरूरी है। तो इस साल मैं बताऊंगा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैटेंट हम लोग ने अभी फाइल किया है, जिससे हम उम्मीद रखते हैं कि जो कार्बन फुटप्रिंट है पेट्रोलियम रिफाइनिंग का, वो 20 से 30% कम हो सकता है। हम लोग अकेले तो काम नहीं करते, NDA और MOU हमने बहुत सारे साइन किए हैं। सिपेट का मैंने अभी आपको जिक्र किया। इसके अलावा एम्स के साथ हमारा MOU है कोविड के काम के लिए, दून अस्पताल के साथ है, और इसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ भी हमारे बड़े सारे MOU हैं। BHEL में हम लोगों ने MOU किया है, जिसमें BHEL हरिद्वार में हमारे दिए हुए टेक्नोलॉजी से ऑक्सीजन प्लांट बन रहे हैं। 2 टन पर डे मेडिकल ऑक्सीजन बनने का प्लांट BHEL बना रही है हमारी टेक्नोलॉजी से। प्रशिक्षण में तो हम लोग काफी आगे हैं। सिर्फ इधर ही नहीं, यूकॉस्ट के साथ कल ही हम लोगों ने एक प्रोग्राम किक ऑफ किया कोविड ट्रेनिंग का, जिसका पहला लेक्चर मैं आज शाम को लूंगा कोविड सेफ्टी के बारे में। परंतु दुनिया के कोने कोने में भी हमारी ट्रेनिंग भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ हो रहा है। पिछले साल लॉकडाउन के ठीक पहले हमारे यहाँ 20 लोग मंगोलिया आए थे। मंगोलिया में पहला रिफाइनरी उनका बन रहा है, और उसकी टेक्नोलॉजी की सारी ट्रेनिंग उनकी टीम को हम लोगों ने दी इधर। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के
शहरों में, और स्किल डेवलपमेंट में भी हम लोग हाथों हाथ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। सिर्फ मतलब हाई टेक्नोलॉजी की नहीं, बट बेसिक टेक्नोलॉजी, ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग, प्रोमोट फिटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इन चीज़ों की हम ट्रेनिंग देते हैं। और लाइब्रेरी साइंस, इंडस्ट्रियल कैटालिसिस, नई नई चीज़ें, जिससे कि जो भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले उसको जो जॉब मार्केट है उसके लिए संदर्भ सही रहे और नई चीज़ों में, नए आह्वानों में उनको नौकरी मिलने में सहायता मिले। बच्चे भी, जो हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है CSIR जिज्ञासा, 45 जिज्ञासा स्कूल, 20,000 से ऊपर बच्चों को हम लोगों ने अब तक प्रोत्साहित किए हैं विज्ञान में। और उसके अलावा कैडेट्स हों या कोई दूसरे कॉलेज के फैकल्टीज हों या तो स्कूल के बच्चे हों, सबको हम लोग यहाँ पे आमंत्रित करते हैं, आके कृपया प्रोत्साहित हुए। महामारी के टाइम में थोड़ा सा स्लो जरूर चला है, पर आभासी रूप से भी कर सकते हैं। और आभासी संगोष्ठियों के अलावा हम लोग जब भी संभव हो लोगों को अपना कैंपस भी खुद दिखाना चाहेंगे कि कैंपस से क्या क्या उनको साधन मिल सकते हैं, संसाधन मिल सकते हैं। और हमारे वैज्ञानिक भी अलग अलग कैंपसेस में जाते हैं, जैसे हेस्को है, जैसे एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, वहां जाके हमारे वैज्ञानिक भी सीख के आते हैं ताकि स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन जारी रहे। यह है हमारे कैंपस की कुछ तस्वीरें। हमारे पंछियों के हम हर साल गिनती करते हैं। इस साल उम्मीद रख रहे हैं 80 से ऊपर जाति प्रजाति मिलेंगे, 90 से ऊपर तितलियां हमें मिल रहे हैं। और यह है हमारा कैंपस का जो प्रधान रास्ता है। हम आशा रखते हैं कि पर्यावरण और हिमालयन विकास के साथ साथ हम इस छोटे हिमालय प्रदेश की बड़ी सफलताएं ला सकते हैं, सबके साथ मिलकर, सबका विकास लेकर और तकनीकी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के तहत। आप सबको संस्थान की ओर से मेरा नमस्कार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े कम शब्दों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के जो इनिशिएटिव्स हैं अक्रॉस कंट्री और अक्रॉस ग्लोब और स्टेट के लिए कौन सी एक्टिविटीज आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में आपने हम सभी को अवगत कराया। स्पेशली जो आपका बायोजेट फ्यूल वाला था वो पूरे देश में प्रथम बार आपके इंस्टीट्यूट ने इसका प्रयास किया और बड़े सक्सेसफुल रहे। बायोडीजल, प्लास्टिक बैंक और परिषद के साथ पूर्व में भी EDP के बहुत सारे प्रोग्राम्स IIP में हम किए हैं। और कल ही, जैसा मैंने पूर्व में बताया, कि महानिदेशक महोदय और आपने उसको कोविड से रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको आपने इनॉग्रेट किया। तो भविष्य में भी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। और आपको भी हम लोग भविष्य में और सुनना चाहेंगे। आप हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी बहुत अच्छा बोलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर लेक्चर सर। धन्यवाद महोदय। Now I may request eminent scientist, geologist, Dr. Kalachand Singh, Director, Wadia Institute of Himalayan Geology. Their institute is under the Department of Science and Technology, and with Wadia Institute of Himalayan Geology, we collaborate many programs related to geology, and we are also thankful to Dr. Kalachand Singh sir that number of times delivered popular lecture to students, researchers and all. So I invite Kalachand Singh sir, Director Wadia Institute, for his address, please. Am I audible, Uniyal ji? Yes sir, you are audible sir, please. Okay, very good afternoon, Dr. Rajendra Dobhal ji, Dr. Uniyal ji, all the distinguished panelists and all others who are listening to this webinar. First of all, I congratulate UCOST for organizing that timely and very important day, Himalayan Day program, and seeing a lot of panelists into this program, and they have shown the importance of the Himalaya, importance of the Himalayan environment. I thank once again UCOST for giving me an opportunity to speak on this day, Himalayan Day. And this Himalaya is very special. Himalayan environment is very special to all of us, not only who are living
in the Himalaya and adjoining regions, but for the entire country, entire world. Why Himalaya is special? Why Himalayan environment is special? Today I will touch upon on this aspect, and this is a great opportunity to speak on this aspect. All of us know that the Himalaya is one of the youngest mountains in the world. It has a very fragile ecosystem. Lot of surface, subsurface processes are still going on. And we have observed a lot of tectonic and neotectonic activities that are very complex, associated with the convergence of the Indian plate with the Eurasian plate, rising of the Himalaya, erosion of the Himalaya, exhumation of the Himalaya, reworking of the rocks. And these are all manifested in the form of landscapes as well as different surface and subsurface processes. And this has changed the landscape of the Himalaya, and it is the landscape of the Himalaya that controls the damage pattern during an earthquake, during a landslide, and avalanche, globs, lobs, and debris flow, as well as flood. So this is one of the important activities going on into this Himalaya. Still it is going on, these androgenic processes. Over that, we also see a lot of anthropogenic factors such as aerosols, metal dust, deformation, consumption of the fossil fuels, burning of the biomass, forest fires. These are playing role to the climate change or global warming, and that are also making some sort of events. We are defining extreme events like heavy precipitation of the snow, heavy precipitation of the rain, and that are leading to some sort of avalanche as well as landslides. A lot of cascading effects are also there, and we have seen in the recently Dolly-Ganga, Rishi-Ganga flash floods. So these are all exothermic or exogenic processes. So Himalaya is experiencing both the endogenic and exogenic processes, and their environment, that's why it's so fragile. And we are experiencing, because of this, lot of natural calamities, disasters, as well as catastrophe. Besides that, besides these endogenic and exogenic processes, we also see a lot of man-made activities, such as unplanned mining, road construction, development of hydropower, urban development, soil degradation, and they are also invoking some sort of calamities into these Himalayan environments. So all these factors together, three important factors, that endogenic process, exogenic process, even some of the very recent man-made phenomena making the Himalayan environment fragile. So this is one side of the Himalayan aspects. Other side of the Himalayan aspect is that it is a storehouse of naturally occurring resources, huge resource. Number one resource is the Himalayan glacier, which is the water tower of Asia, and the lifeline of billions of people. They can get water for their irrigation, for their drinking water, in hydroelectric power generation, and even for transport. Some of the high altitude river systems are utilized to transport the logs and other material from high altitude to low altitude. And the sediment water transmits into the center stage has made an attractive place for the settlement, attractive place for the agroeconomy. The unique pressure temperature regime of the Himalaya has made this particular place is very, very hospitable for the formation of some of the precious minerals and ore bodies, as well as springs and hydrocarbon resources into the Himalayan terrain. Because once upon a time, in between, there was a Tethys Sea that has been closed. So a lot of organic matter, a lot of sediments are there. So that again provide a good hospitable good and hospitable regime for the formation of the hydrocarbons. So as a whole, we can see the Himalaya has tremendous amount of different form of resources. Again, because of the height of the Himalaya, our
this summer monsoon and weather pattern also get changed, and we receive the rainfall, etc. So therefore, we can see Himalayan fragile environment associated with the natural hazard at one side, and other side huge resources that can meet our day-to-day requirement, our fulfill the tremendous need of the socio-economic development. But since at one hand we have defined Himalaya as a fragile, other one we are seeing lot of resources in different forms. I am not touching upon any other resources than the geo resources. But all those geo resources cannot be mined, cannot be taken out without any unscientific way. Because if we do that, if we overexploit that, then definitely it will make an impact to the fragility of the Himalaya. So we need to evolve a mechanism to have a balance between the exploitation for the economic purposes as well as preservation of the Himalayan ecosystem or environment for sustainability. So that's why Himalaya is so important to all of us. That's why Himalayan environment is so important to all of us. And all of us have a greater responsibility to take care of that, to have a balance between the economy and the ecology. We need to build a resilience or proper adaptation strategy to live with the natural hazards that cannot be prevented. Just like Corona also has taught us that we have to live with this. We have to build our immunity system. We have to follow certain protocols or guidelines. Similarly, once we are living into the Himalayan regime, Himalayan ecosystem, we also have to adapt some of the strategy based on which we will be able to sustain into this Himalayan environment. So that is the need of the hour. We need to educate the people. We need to understand what are different processes are going on, what we can provide a remedial solution, what we cannot provide a remedial solution, but can do something. What is that something? Just like we talked about earthquakes, just like we talked about the landslides, we talked about the avalanche. All these things, natural phenomena, cannot be stopped. But their impact to the ecosystem, their impact to the Himalayan environment can be reduced. How we can reduce? For that, we need to understand what are the processes going on, what sort of data sets are required, how we can analyze the data, how we can extract the information, and how that knowledge can be utilized to provide to develop some sort of strategy so that we can reduce the impact on the society. We can reduce the impact on the structures, properties, lives, and livestock. I'll give an example at the end how we can do, particularly taking attention to the recently happened that glacier disaster, glacier avalanche into the Rishiganga, Dhaliganga area. So particularly, if we look into that aspect, that glacier aspects, so many glaciers are there into this Himalayan region. Just now, Prakash also showed some of the satellite imagery. More than 10,000 glaciers. And something is happening. And what is happening, not causing any damage, we are not bothering about that. Wherever it is causing some damage, we are bothering about those regions. So the time has come, we need to identify those catchments which have huge habitation or some sort of structure or maybe some sort of hydroelectric power project, and that area we need to monitor. We need to monitor such a way 24/7 the data will be transmitted and the data has to be analyzed and give some sort of indication if we can see some anomaly is going to take place, and that particular message has to be percolated into that region, the local people. But how do the local people respond? For that, we need to adapt certain procedure. That procedure, standard operating procedure, and with the help of the scientific community, with the help of the local authority, with the help of the local people, with the help of the disaster management authority, in a complete network,
percolating the information from everywhere, we can have some sort of monitoring and warning system. And once we can provide that warning system, that I think natural phenomena will be there, but that impact, that evacuation will be able to do that, and that impact can be reduced. One example, Rishiganga, we have seen that people have taken a lot of videograph, photograph when that had started in that 5,600 meter above sea level. From that point, when that nucleated, it started falling and rolling over the slope and got admixture with the water, sediments, moraines, and all these ice broken into pieces, falling from a height of 5,600 meter to 3,600 meter. They created an admixture called slurry material, and a slope region, they started flowing down, created some sort of lake and devastated that hydropower project near Reni village over the Rishiganga, then the Tapovan project over the Dhaliganga. But it didn't take place immediately. It took a lot of time to make that impact coming from high height to the low height, low catchment area. So we had sufficient time, particularly in the case of avalanche, snow avalanche or glacier avalanche. It is possible to monitor as well as provide early warning system, not like earthquakes. In the case of earthquakes, it happens within seconds, 10 seconds, 15 seconds, depending on distance of the earthquake and the site where we are thinking for the damage. So if the distances are more, we can have some more time. But still in the case of earthquake, even an earthquake takes place 20 kilometers, 200 kilometers away, there will be hardly 20 seconds time. But in the case of this avalanche, that glacier avalanche, what happened into the Rishiganga, we have seen, even we have seen the videograph people just transmitted through the WhatsApp, and after 25 minutes, 20 minutes, the Tapovan disaster took place. There was sufficient time, but we couldn't sensitize the people. We couldn't make a standard operating system, how we can prevent the loss of life, how we can prevent about more than 200 people are feared dead. So this case could have been, but because we couldn't make some sort of arrangement of the monitoring as well as early warning system, we failed. There was plenty of time, 25 minutes time is quite good enough. So time has come, whenever there will be some sort of structure like hydroelectric project, they should have their own warning system, alert system or siren system. Whenever some sort of message will go to them, they will automatically switch off, they will automatically come, they will ask the people to come out. And this is the only way we can save people, because natural phenomena cannot be stopped. So based on geoscientific investigation, we can identify what are the most potential zones for the occurrences of the earthquake, which are the most vulnerable spots or most susceptible zone for the occurrences of the landslides, and which are the region which glaciers we need to monitor, because I have said there are 10,000 glaciers, and even in Uttarakhand we have around 1,000 glaciers. So which glacier we should take care? The glacier which has huge population, some structure, some hydroelectric project in the catchment, we need to monitor that and give some sort of early warning. It's possible. So our job has to be united. Silo, if we work, scientific community does their science, publish the paper and send some report, it will not, that effective implementation will not take place. For that, we have to have a systematic procedure, collecting this information from the upper catchment to lower catchment, percolating the information, then administration role, that disaster management authorities role, and the local people, they have to respond. If they do not respond proper time, properly, and for that we need to have some SOP, standard operating procedure. Without that, we can't do it. Sometimes we need to do some sort of mock drilling. In Japan, even how they are successful, even for the mitigation during earthquake, because they very frequently they do mock drilling. Often they do this exercise and people are sensitized. So whenever they experience such a thing or warning, they respond immediately. If you do not respond immediately, you can't do anything. You can't mitigate this type of
phenomena, natural phenomena. So based on this study, geoscience study, based on lot of other remote sensing information, we need to have a sort of information that should be percolated. Even we have the guidelines has to be strictly followed. If we understand that this region is very much earthquake prone, then any sort of construction of the building, they should follow the building code. Even if it is an old building, that building has to be made retrofitted. So a lot of things, but unless we implement those information or implement those guidelines through some rules, regulations, or whatever way possible, it will not be made any sort of effective. At Wadia Institute, we have been pursuing a lot of geoscientific investigation and built a lot of state-of-the-art analytical facilities, field equipment, so that we collect useful data from the field to extract information from the data, and we have state-of-the-art data processing, modeling, analysis facilities, so that correct information can be extracted from the data, and that correct information only will be utilized, and that gain knowledge will give a wise decision whatever we do, to understand the earthquake process, to understand the landslide process, to understand the avalanche, and how we'll percolate all these information. If high quality data is not available, if high standard of processing or analysis of the data is not understood, so capacity building is very, very important. And then how the human intelligence, how we are interpreting the extracted information, that is very, very important. So that will, if knowledge gained from the data is very good, definitely that will provide a wise decision to take, whether in evacuation of the people, whether giving an alert to the people, or we give some sort of lot of other type of prediction into that region. So based on geoscientific investigation, Wadia Institute of Himalayan Geology has been pursuing a lot of research for the characterization and assessment of the different surface and subsurface processes. That I showed in the beginning, that because of the lot of endogenic and exogenic processes, Himalaya is experiencing that forces, loads, and to understand, and that are getting reflected into different surface process and subsurface process. Landscape is getting changed. They are controlling many factors. So we need to characterize and assess all those informations related to the surface studies, surface phenomena, related to the subsurface phenomena. And this Himalayan Institute is specifically addressing all those issues related to Himalayan geohazards, related to Himalayan georesources, climate tectonic interaction. If we want to predict something, we need to know what exactly happened into the past. So you also need to know what exactly happened into the past, and what exactly happened to the climate, what exactly happened to the tectonic. So all these informations we can provide. Because of this Himalayan, lot of things happening, there has been change into the fauna and flora, their biodiversity, ecology. So we also understand by looking into the data, fossils, the biotic evolution, why some sort of species have been extinct, why some new species are getting evolved, and where are the natural occurrences of the resources, minerals, ores, geothermals, hydrocarbons. We have also identified some of the springs which are about to die, which are dead. How we can rejuvenate those springs? So the spring rejuvenation will provide a lot of information towards the drinking water problem. Some of the rivers, we estimate, we collect river water from different parts in the length of the water, starting from the upper catchment, middle catchment, and lower catchment, and find out the constituent elements which can pollute the water. Because when we talk about environment, we talk 4 important things: air, water, soil, and forest. So that water contamination we can identify, and we can find out the source, whether it is geogenic source or it is anthropogenic source, industry or any other. So we can stop them. Geogenic we cannot stop, but at least all these are anthropogenic or factory related phenomena we can stop, and we can rejuvenate or regenerate the water, river water. So
taking care of the water we can do. Forest is very, very important. Yeah, all of us know the forest that consumes lot of carbon dioxide. It helps for the carbon dioxide sequestration and generates oxygen for us. We are talking about oxygen. Dr. Rajendra also has talked about oxygen, how we can, and we have experienced the importance of the oxygen during the COVID-19 case. So like that, different strategy and different type of things, so huge resources, so huge problems or issues related to the Himalaya exist. So we need to understand them in a very, very holistic way. And if we can do that, I think we'll be able to take care of the Himalaya, we'll be able to preserve of the Himalaya, we'll be able to have sustainable socio-economic development into this region. We have experienced so many phenomena in the past into the Himalayan region, starting from avalanches, cloudbursts, debris flow, flash flood, glacial lake outburst, landslides, and some of the examples of the recent hazards include that late 2010 cloudburst, Kedarnath 2013 cloudburst and glob, Gangotri 2017 debris flow and flash floods, Chamoli we have experienced avalanche and flash floods. So all these things are happening and we need to integrate. We need to have glaciological data, we need to have hydrological data, meteorological data, seismological data, and if we integrate, we'll be able to provide what is going on into the Himalayan glaciers, what is happening to the retreat, melting, etc., and formation of the high altitude glacial lakes. So by having constant monitoring and getting real-time data, analyzing them, warning them will be a best choice at the present scenario. And we need to work on that. And in that case, WADIA has recently started to work in that direction. In the Himalayan region, all of us know that if we go upward, the temperature decreases. But Himalaya is a specific region. There have been, we have observed elevation-dependent warming. Even if temperature decreases upward with the elevation, but there has been elevation-dependent warming. What is that? That means if we look into the elevation less than 500 meters, it shows warming rate less than 0.2 degrees Celsius per decade. If we look into elevation above 2000 meters, we observe warming rate 0.6 degree per Celsius per decade. So this way, and Himalaya, all the glaciers are occurring into the high altitude. So you see the temperature phenomena having different role at different altitude. And Himalayan temperature behavior is different, completely different from the plain temperature behavior. So we need to understand all these phenomena, and then only we'll be able to say something, whether anything related to exploitation of the resources or understanding some of the impact caused by the natural earthquake or natural phenomena. We have been monitoring some of the glaciers, and many institutes are involved into that study, and they have found out as a whole that most of the glaciers into the Himalayan region are retreating, but they are not in the same way. They are having different climatic regime, and their retreat and melting are changing at different rates. Some of the things, just I will touch another couple of minutes, that from the study, what WADIA has done into the past, it shows the Dokriani Glacier into the Bhagirathi Basin is retreating at a rate of 15 to 20 meters per year. Whereas Chorabari Glacier in Mandakini Basin is retreating at 9 to 11 meters per year. But if we look into the case into this Karakoram region, there we have not observed any change into the ice mass. In fact, somewhere we observed that accumulation of the ice has taken place. So you can see even in the Bagni and Dunagiri, there are some sort of rate of glacial retreat has taken place into that region. So from this study, it shows that climate is making an impact to the glaciers. Another important thing we can understand when we look into the ice cover in the snow line and forest cover in the forest line, there you can see that ice cover area is decreasing, whereas forest cover area is increasing in the high altitude. So that shows that ice covered area is
decreasing, that means melting, and in those places some more trees are growing. So this is happening. So like that, we can understand many phenomena, and in this way, if we can have some sort of another important point I will touch upon over here, that the black carbon pollution. Black carbon pollution into this environment is very, very important, not only to understand the ecology of the Himalaya, but also to understand the impact to the health of our body. This particular black carbon is nothing but a black material that strongly light absorbing components, the particulate matter that may be less than 10 micron, less than 2.5 micron, and that absorbs light and therefore it warms, and they are short-lived. Because of the short-lived and because of some sort of wind flow, because of some sort of precipitation or monsoon, they also can get deposited over the ice, and you can understand, because they are heat absorber, so ice will be melted. So this we need to understand what are the causes of the black carbon, and if we can stop all those anthropogenic activities, then we will be able to maintain the health of the glaciers, and which is very, very important aspect into the present scenario. And all of us know that this black carbon generally formed by incomplete combustion of the fossil fuels, biofuels, biomass, wildfire, and these are the major component of the soot, and this dark color absorbs the solar radiation and causes the warming. We all know that. And if black carbon sits over the surface of the ice, they make dark, and that absorbs a lot of heat and causes the melting of the snow and ice. The black carbon has a lot of impact to the climate and climate change. It has also has a lot of adverse impact to our health complications, such as allergy, respiratory ailments, carcinogenic symptoms. And these things, if we know, then really it will help us to reduce the impact. So I will not take much time. I stop over here, and it is a high time to take care of the Himalayan ecosystem, Himalayan environment, Himalayan health. If Himalayan health is fine, our health is also fine. So this is the few words. I once again wish all of you a हिमालय दिवस की शुभकामनाएं, एंड एवरी डे हम लोगों को हिमालय डे मनाना चाहिए, हिमालय के बारे में सोचना चाहिए, तभी हम हिमालय को बचा पाएंगे, हमको भी बचा पाएंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much, sir. You have rightly pointed out that geological studies is very important, and as far as Himalayan state is concerned, Uttarakhand, geology is important, and recently we have witnessed lost many disasters in recent past, and disaster management is an important issue here. Landslide and glacier monitoring is important, and you have very rightly pointed out that early warning system is more early warning systems to be developed so that we can know more about the disaster. And you have very rightly pointed out that multi-institutional research activity should be encouraged. So, and we are looking forward, sir, more and more interaction with Wadia Institute of Himalayan Geology, and you are kind enough to deliver many popular lecture to the researchers and school students, and we are looking forward to the same. Thank you very much for your time, sir. Thank you. Thank you very much. Now I request Dr. Lakshmikant sir, Director ICR Vivekanand Parvati Krishi Anusandhan, Vipkas Almora. He is a well-known agriculture and horticulture scientist, and in recent past we had many interaction with Vipkas, and they are doing excellent work for transferring of technology to the farmers and to the people, those who are doing the agriculture. So with these words, sir, I welcome you here and request you to, sir, deliver your address, please. Am I audible? Yes, sir, you are, please. Okay. Thank you, Dr. Unyal. And shall I speak in English or Hindi? Sir, where you want, sir. Okay. So let me speak in Hindi then. आप सभी को हिमालय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
परम आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र दोभाल जी, डायरेक्टर जनरल रिकॉस्ट, सारे सम्मानित पैनलिस्ट, डॉक्टर उनियाल, मैं आयोजकों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि मेरे को आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दिया इसमें जो पार्टिसिपेट करने का। और मुझे ये कहा गया था कि मुझे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और क्या क्या साइंस टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी यहाँ पे चल रही हैं वो बतलाने के लिए। तो वैसे ही समय काफी ज्यादा हो गया है। आई विल नॉट टेक मच टाइम। दिस इंस्टीट्यूट इज नोन एज ए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान एंड ये जो है एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। लगभग 98 वर्ष हम लोग पूरे कर चुके हैं और बड़ा ही हिस्टोरिकल ये इंस्टीट्यूट है, जिसको कि ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये प्रोफेसर बोसी सेन है। इन्होंने 1924 में इस संस्थान की स्थापना कलकत्ता में की थी। प्रोफेसर सेन जो है ये सर जेसी बोस के साथ में काम करते थे, जो कि फर्स्ट नोबेल लॉरेट हैं इंडिया के। और 1924 में इन्होंने अपनी सेपरेट लेबोरेटरी वहां पे बनाई और 1936 में इसको इन्होंने अल्मोड़ा शिफ्ट किया, क्योंकि ये प्रोफेसर सेन जो थे ये स्वामी विवेकानंद के जो प्रथम शिष्य थे उनके शिष्य थे और उनसे प्रेरित होकर के इन्होंने इसको अल्मोड़ा शिफ्ट किया। ये जो महिला दिख रही हैं ये श्रीमती गर्ट्रूड इमर्सन सेन है। ये अमेरिकन लेडी थी जिन्होंने प्रोफेसर बोसी सेन के साथ में शादी किया और अपना सारा जीवन यहीं पे बिताया। जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये हमारा हवालबाग फार्म है। अगर थोड़ा हिस्टोरिकल देखेंगे तो 1924 में जैसे मैंने बताया वहां ये एस्टेब्लिश हुआ और 36 में यहाँ पे शिफ्ट हुआ और 36 से लेके 59 तक ये जो है एज ए प्राइवेट लेबोरेटरी रन किया। लेकिन 43 में जो बंगाल फेमिन आया था उसके बाद बोसी सेन ने अपनी प्रायोरिटी जो फंडामेंटल साइंस से एग्रीकल्चर रिसर्च की तरफ को कन्वर्ट की। वहां उन्होंने सोचा कि नहीं, फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन बेसिक रिसर्च। एंड 1974 में ये आईसीआर का एक अभिन्न अंग बना। इस समय आईसीआर के पूरे कंट्री में 103 संस्थान है। तो हिल्स के अंदर में एक ये संस्थान है जो कि मल्टी क्रॉप मल्टीडिसिप्लिनरी है और हमारे 2 केवीकेस हैं और एक हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग स्टेशन है। और जैसा आप जानते हैं एग्रीकल्चर बेसिकली ये अप्लाइड साइंस वाला पार्ट ज्यादा है और तो यहाँ पे आईपीआर का इतना ज्यादा चलन नहीं था, बट आफ्टर WTO आईपीआर भी इम्पोर्टेंट हुआ और ये अभी वर्तमान में हमारे पास 3 पेटेंट आ चुके हैं। ये देखें तो ये अल्मोड़ा हेडक्वार्टर है हमारा, ये फार्म है। ये उत्तरकाशी का केवीके है, ये बागेश्वर का केवीके है और ये हाई टेस्टिंग साइट है मुक्तेश्वर में। मैंडेट अगर देखेंगे तो बेसिक स्ट्रेटजिक एंड एडॉप्टिव रिसर्च फॉर इम्पोर्टेंट for increasing the productivity and quality of important hill crops with conservation and efficient utilization of resources, natural resources, then post-harvest technology and technology dissemination and capacity building in hill agriculture. मैंडेट एरिया देखेंगे तो जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन है जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरीज हैं, ये हमारा कार्य क्षेत्र है। अगर इंस्टीट्यूट के बारे में देखेंगे तो ये इंस्टीट्यूट अपने आप में बहुत अनूठा इंस्टीट्यूट है। देश के अंदर में बहुत सारे फर्स्ट जो हैं इस इंस्टीट्यूट के नाम पे हैं। सबसे पहले जो मेज का हाइब्रिड था VL मक्का 54 वो इसी संस्थान के द्वारा कंट्री में दिया गया। प्याज का जो पहला हाइब्रिड था वो भी इसी संस्थान के द्वारा दिया गया। जो गेहूं की द्विदेशीय प्रजाति जिसमें कि आप एक हरे चारे की कटाई ले सकते हैं और फिर उसी फसल से दाने की उपज ले सकते हैं, वो इस संस्थान के द्वारा दी गई। जो बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक बायोफर्टिफाइड हाइब्रिड जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मार्केट सिलेक्शन के थ्रू इस संस्थान के द्वारा जो है वो दिया गया कंट्री के अंदर में। पब्लिक सेक्टर के थ्रू चेरी टोमेटो की पहली वैरायटी इस संस्थान के द्वारा दी गई है। स्मॉल मिलेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज और एक फुल्ली मेटेलिक प्लाव जो कि हमारे पर्यावरण की काफी रक्षा करता है, जो कि वुडन प्लाव को रिप्लेस करता है, वो इस संस्थान के द्वारा डेवलप किया गया। व्हाइट ग्रब जो कुरमुला है इसकी एक पूरी फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी जो कि पेटेंटेड है वो यहाँ इस संस्थान के द्वारा विकसित की गई। साथ में रिसेंटली अभी जो हमारा मडवा है
इसका आपने देखा होगा दाना भूरा होता है, तो इसमें एक सफेद रंग की दाने की प्रजाति इस संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। जहां तक अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो 2 बार इस संस्थान को बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवार्ड दिया गया है। साथ में और भी बहुत सारे रिकॉग्निशंस संस्थान को दिए गए हैं। जो पॉपुलर टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो वैरायटीज हैं हमारी, देन स्मॉल फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं और वाटर हार्वेस्टिंग एंड फॉडर प्रोडक्शन के अंदर में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि पॉपुलर टेक्नोलॉजीज में हैं। अगर मेजर प्रोग्राम देखें तो 4 मेजर प्रोग्राम हैं इंस्टीट्यूट के अंदर में। इनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेजर हिल क्रॉप्स, ये क्रॉप इंप्रूवमेंट डिवीजन का काम है। देन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, ये क्रॉप प्रोडक्शन डिवीजन का काम है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्रॉप प्रोटेक्शन डिवीजन देखता है और सोशल इकोनॉमिक स्टडीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोशल साइंस सेक्शन जो है वो देखता है हमारा। पिछले 4 सालों में अगर बात करें जो मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं, हमने टोटल 23 वैरायटीज इस ड्यूरेशन में डेवलप की हैं। यानी अगर आप एवरेज देखें तो 28 वैरायटीज डेवलप की हैं, जबकि पिछले 12th प्लान में 23 की थी, तो 7 वैरायटी पर ईयर का एवरेज आता है। टोटल अभी तक इस संस्थान के द्वारा 172 हाई यील्डिंग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज जो है वो डेवलप की जा चुकी है। एफएलडीज दिखाते हैं हमें कि जो फार्मर्स की इनकम है वो 12,888 से 35,153 रुपए तक नेट रिटर्न उसमें बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म स्टडीज दिखाती हैं कि ऑर्गेनिक मैन्योर का एप्लीकेशन बहुत जरूरी है अगर फर्टिलिटी को सस्टेन करना है। देन जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग है फिंगर मिलेट और बाकी क्रॉप्स में, वो एक नर्सरी प्रोन एक्टिविटी है। इसके लिए जो इंस्टीट्यूट ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो काफी पॉपुलर हुई है। जो रिसेंट आईसीटी का प्रयोग किया है हमने, जैसे नीड बेस्ड एसएमएस, एम किसान वॉइस एसएमएस एंड व्हाट्सएप के थ्रू डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और अभी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो न्यू नॉर्मल है उसके अंदर में संस्थान द्वारा की जा रही हैं। अगर वैराइटल कंट्रीब्यूशन देखें तो जो 13 से 16 के बीच में 17 वैरायटीज डेवलप हुई थी, जबकि 17 से 21 के बीच में 28 वैरायटीज डिफरेंट क्रॉप्स की डेवलप की गई हैं। ये कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जो इस ड्यूरेशन में आई हैं। जो ये है, ये आपकी बायोफोर्टिफाइड है, क्यूपीएम क्वालिटी प्रोटीन मेज है। ये स्वीट कॉर्न का हाइब्रिड है। ये जो मैं आपसे सफेद मडवा की बात कर रहा था, सफेद दाने वाले मडवा की बात, ये वो प्रजाति है। ये चेरी टोमेटो की पहली प्रजाति इस संस्थान के द्वारा पब्लिक सेक्टर के थ्रू जो निकली है, इसमें विटामिन सी की मात्रा काफी ज्यादा है। ये आपके जो सब्जी मटर और ये जो चूहा है जो हमारा चारधाम यात्रा रूट पे ये काफी महत्व का होगा। साथ में ये भट्ट की जो नई प्रजाति है वो निकली है। वेजिटेबल्स में अगर देखें, सब्जियां एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पर्वतीय कृषि का, तो ये डिफरेंट प्रजाति हैं जो कि फार्मर यूज कर सकते हैं और इसका बीज खुद बना सकते हैं क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं है। कई इंस्टीट्यूट के साथ में हमारा कोलैबोरेटिव प्रोग्राम भी चलता है, तो पिछले 17 से 21 के ड्यूरेशन में ये 7 वैरायटीज इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन के माध्यम से निकली हैं। जो 4 मुख्य जो बायोफर्टिफाइड वैरायटीज इस ड्यूरेशन में हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्यूपीएम 9 और चूहा, सफेद मडवा, चेरी टोमेटो। सफेद मडवे के प्रोडक्ट देखें आप तो ये सफेद मडवे की रोटी है, जबकि ये नॉर्मल मडवे की रोटी है, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं सफेद मडवे के। और अगर आप इसका न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी देखें तो इसमें जो है प्रोटीन भी ज्यादा है और कैल्शियम भी ज्यादा है। तो आने वाले समय में ये जो मडवा कल्टीवेशन है जो उत्तराखंड के अंदर में, उसको रिवोल्यूशनाइज करेगी ये प्रजाति। अगर हमारा कंट्रीब्यूशन देखें तो पूरे नॉर्दर्न हिल जोन के अंदर में डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर में ये कंट्रीब्यूशन है हमारा। लेकिन अगर केवल उत्तराखंड की बात करेंगे तो जो उत्तराखंड का जो हिल रीजन है उसमें 73.18% कंट्रीब्यूशन इस इंस्टीट्यूट का है। सीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और पिछले सालों में हमने जो कृषक सहभागी बीज उत्पादन है उसको बढ़ाने का कोशिश किया है। और देखें आप तो टोटल 713 कुंटल हम लोगों ने किसानों के खेतों पे उनके माध्यम से ये बीज का उत्पादन करवाया है। जो भी टेक्नोलॉजी है उसको किसानों के खेत पे ले जाना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे डिफरेंट एरियाज में, ये जॉनसर भावर का है, ये पेरेन है नागालैंड में,
ये जम्मू कश्मीर का है, ये श्रीनगर, और ये जो जौनसार भावर का एरिया है वहां पे है, और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज ले गए हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में हम मेज के हाइब्रिड लेके गए, तो त्रिपुरा के अंदर में गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा करके 10,000 हेक्टेयर में मक्का के हाइब्रिड को ले जाने का जो है निश्चय किया, और इसमें 6,000 रुपए का सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी देने का उन्होंने प्रयास वहां पे डिक्लेरेशन किया। ये देखें, जो लाइन सोइंग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बड़ा मुश्किल होता है किसानों के बीच में। ये वो फोटोग्राफ्स हैं जहां हमने एक बार डेमोन्स्ट्रेट किया और उसके बाद फार्मर ने खुद इसको अडॉप्ट किया। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से किसानों ने खुद इसको अडॉप्ट किया और हमको बुलाया कि देखिए साहब, जो आपने बताया था वो हमने कैसे किया है। जो किसानों के खेत में लगभग 151.7 हेक्टेयर में हम लोगों ने जो डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, उसमें आप देखें तो 29% से लेकर के 45% तक का जो फार्मर के अपनी वैरायटीज हैं उसके ऊपर में गेन है। और ये देखें तो आपको नेट रिटर्न उनको कितना प्राप्त हो रहा है केवल वैराइटल रिप्लेसमेंट से। साइंस वाले एस्पेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन पे हम लोग बेसिकली कंसंट्रेट कर रहे हैं। कुछ ट्रांसजेनिक का भी है, लेकिन बेसिकली वी आर वर्किंग ऑन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। ये दो वैरायटीज हैं वीट की, एक फैमिली जोन और लेट जोन, जिसमें कि YR10 एंड LR24 जो रस्ट रेजिस्टेंट जीन है वो पिरामिड किए गए हैं। ये देखिए डिफरेंट लाइंस उसकी, ये आने वाले समय में दे विल बी रिलीज्ड। इसी तरह से मेज में ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा मुश्किल काम है, तो ये जो रीजनरेशन प्रोटोकॉल इस इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है थ्रू सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस फ्रॉम द सीड। जो बायोफोर्टिफिकेशन इन मेज का काम है, इसमें ट्रिप्टोफैन, लाइसिन जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, इनको बढ़ाने का और उनको कंबाइन करने का, लो फाइटेट के साथ में कंबाइन करने का काम चल रहा है। ये जो मटेरियल है ये टेस्टिंग स्टेज में है, ऑल इंडिया टेस्टिंग में। इसी तरह से फाइटेट के साथ में जो ट्रिप्टोफैन को कंबाइन करने का भी ये काम चल रहा है, और ये भी लाइंस अभी टेस्टिंग में है, फाइनल स्टेज में है। जो ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा समय लगता है, लगभग एक वैरायटी आने में कम से कम 12 साल या 12 सीजन लगते हैं, तो उसको कम करने के लिए जो DH डबल हैप्लॉइडी का काम इस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है मेज के अंदर में, और ये मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये फैसिलिटी और इस टेक्नोलॉजी में हम देश में सबसे अग्रणी हैं, और ये फैसिलिटी अभी केवल हमारे पास है देश के अंदर में, और लगभग 1200,000 से ऊपर DH लाइंस हमने डेवलप की हैं। ये थ्रू जो डोनर है ये हमें सिमिट मैक्सिको से प्राप्त हुआ है। इससे ये पता कर लेते हैं कि ये हैप्लॉइड है, और उसको डबल हैप्लॉइड करके लगभग जो है सीजन हमारा 3 से 4 साल का इसमें हमें फायदा हो जाता है। ये हमने एक नया मार्कर इसमें सेलेक्ट किया है जो कि काफी इफेक्टिव है इसकी सेलेक्ट करने के लिए। 82.6% इसका एफिशिएंसी है। गार्लिक जो लहसुन है, इसमें प्लांटिंग मटेरियल एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बल्की होता है, इसकी जो बल्ब्स होते हैं वो लगते हैं, और बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। तो हमने ये बुलबिल से ट्राई किया है इसको, और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। और ये देखें तो बुलबिल से जो हमने प्रोड्यूस किया 202 कुंटल उसमें हमें मिला, और जो क्लोज से जो उसके बल्ब से प्रोड्यूस किया 223 कुंटल मिला। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जब इसको कॉस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी होने जा रही है। स्पेस कम गिरता है, जो स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट घट जाएगा, तो इट विल बी ए बेनिफिशियल टेक्नोलॉजी, एंड इसको अभी फाइन ट्यून किया जा रहा है। जर्मप्लाज्म का एक हमारे पास यहाँ पे मीडियम टर्म मॉड्यूल है, जिसमें करीब 16,800 हिल जर्मप्लाज्म और बाकी जर्मप्लाज्म कलेक्ट किए गए हैं। इसमें से 4,700 जो है हिल जर्मप्लाज्म है, जो समय समय पे इवेल्युएट करके जो डिफरेंट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है उसके अंदर में इनको इनकॉर्पोरेशन, इनका इन्वॉल्वमेंट किया जाता है। दूसरा जो अभी मेरे पूर्व वक्ता भी बता रहे थे, पानी की एक बड़ी समस्या है पहाड़ों के अंदर में, और हमारा काफी भूभाग जो है वो वर्षाश्रित है। हालांकि बहुत सारा पानी हिमालय से ही निकल के जाता है, हिमालय को वाटर टावर भी कहा जाता है,
तो इसको कैसे हम लोग पानी को संचय करके उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है एलडीपी वाटर टैंक की टेक्नोलॉजी, इसमें बेसिकली ये पिट खोद करके इसको इस तरह से हार्वेस्ट करके इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट उसमें। ये जो है नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के जो सीमेंट टैंक बनाती है, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है बिकॉज बहुत सारे ट्रेमर्स आते रहते हैं, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, पानी स्टोर नहीं हो पाता है। तो ये इनिशियली था, अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशन करके दिस वी हैव कम आउट विद ए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, जो कि लोकल सैंड से इसको ब्लॉक बना करके इसको आप पानी रोक सकते हैं, और इसका जो कॉस्ट है वो 0.57 रुपीज पर लीटर आ रहा है, और ये लगभग 40 साल से ऊपर इसको आप जो है ये मेंटेन हो सकता है, इसका लाइफ जो है। इस वाटर को कैसे यूज करना है, ऐसे वाटर यूज हार्वेस्ट करके डिफरेंट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में डिफरेंट यूज इस वाटर का है। ये एक विलेज है जागेश्वर के पास में, करीब 4-5 किलोमीटर वहां से आगे, जिसमें कि हम लोगों ने दिखाया है वाटर को हार्वेस्ट करके प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कैसे यूज करना है। इसमें करीब 40 पॉली टैंक बनवाए गए हैं और 105 पॉली हाउसेस हैं, और ये देखेंगे आप, दिस इज ये हमारे इंटरवेंशन से पहले का है, और ये जो है ये चौकोर वाले पॉली टैंक्स हैं, बाकी पॉली हाउसेस हैं। दिस इज द सिचुएशन नाउ। और अगर देखें 2004 में हम लोगों ने इंटरवेंशन किया था वहां पे, और अगर 13-14 का हमारे पास डेटा है, तो लगभग डबल ये इनकम उनका वहां पे हो गया है, और इनका जो लैंड यूज पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। वेजिटेबल ज्यादा बढ़ा है, फ्रूट्स बढ़ा है, सीरियल्स इनका कम हुआ है। उस वक्त बहुत सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे अभी रिमोट सेंसिंग वाले दिखा रहे थे, इसी तरह से जीआईएस का हम लोगों ने यूज करके, अभी ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक दाड़िम गांव पड़ता है, वहां पर 65 पॉली टैंक्स बनवाए हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचुरल फ्लो ऑफ द वाटर। एंड जो फार्मर का इनकम में वहां फर्क पड़ा है इस वाटर हार्वेस्टिंग के प्रयोग से, वो लगभग 97% उनका इनकम बढ़ा है। जो ऑर्गेनिक पे भी हम लोग थोड़ा काम कर रहे हैं, और इसमें जो ये वाला देखें आप, वर्मी वॉश और पंचगव्य को जब यूज किया गया तो जो फर्टिलाइजर के बराबर इसमें उपज मिल रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ये अल्मोड़ा जो है एक डिजीज जैसे रस्ट और ब्लास्ट के लिए एक बहुत ही हॉट स्पॉट लोकेशन है, और यहाँ पे नेचुरल कंडीशन में इतना आता है, डिजीज आती है कि बहुत अच्छा स्क्रीनिंग यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ में जो कुछ हमने माइक्रोब्स भी डिफरेंट हिमालयन रीजन से आइसोलेट किए हैं, करीब 1600 स्टडी किए हैं, उसमें से कुछ हमने फाइंड आउट किए हैं जो या तो अकेले या कंसोर्शियम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लगभग 15 से 20% तक यील्ड इसमें बढ़ रही है। ये मशरूम के अंदर में हमने ट्राई किया है, देखिए ये अनइनोकुलेटेड है और ये इनोकुलेटेड में जो है इतना फर्क इसमें आ रहा है, तो ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है। जो पर्वतीय कृषि है, इसमें आप जानते हैं कि महिलाओं पे ज्यादा आधारित है, और चूंकि छोटी छोटी जोत है, मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा किया नहीं जा सकता है, तो ये ड्रेजरी प्रोन एक्टिविटीज हैं। इनके लिए संस्थान ने बहुत सारे जो स्मॉल टूल्स डेवलप किए हैं, जैसे ये तो वर्मी कंपोस्ट को सीव करने के लिए है। मक्का की जो शेलिंग है एक बहुत ही कम्बरसम जॉब है, इसके लिए मक्का शेलर डेवलप किया हुआ है। देन ये जो लाइन मेकिंग का मैंने बताया था आपको, ये धान की मड़ाई भी बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए ये थ्रेशर डेवलप किया हुआ है। साथ में मडवा मादिरा की जो मड़ाई और उसकी पर्लिंग है वो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही इसमें समय भी व्यर्थ होता है, तो इसके लिए ये मडवा मादिरा थ्रेशर हमारा है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी मड़ाई और इसकी पर्लिंग कर देता है, और इससे इसका जो मूल्य है वो भी बढ़ जाता है। ये लौह हल की जो बात कर रहे थे हम, ये पूरा लकड़ी को रिप्लेस करके बनाया हुआ है, और मैं आपके संज्ञान में ये जो है जो कुरमुला कीट है हमारा, उसको पकड़ने का ये ट्रैप है, इंसेक्ट ट्रैप, ये आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये जो है हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी के साथ में कॉमर्शलाइज किए हुए हैं, और ये न केवल यहाँ पे बल्कि इस प्रदेश के बाहर जो है बहुत सारा हजारों की संख्या में ये
किसानों के मध्य पहुंच चुके हैं। ये कोविड के समय में एक हमने हैंड फ्री वॉश सिस्टम डेवलप किया था, जो कि अल्मोड़ा के डिफरेंट जगह पे दिया। देखिए, पैडी ट्रांसप्लांटर एक ये बाहर का हमने टेस्ट किया है, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग एक बहुत ही ड्रजरी प्रोन एक्टिविटी है, और इनिशियल रिजल्ट इसका बता रहे हैं कि इसमें काफी जो है रिडक्शन हो रहा है ड्रजरी के अंदर में। आप देखें परसेंटेज चेंज ये इसमें मिल रहा है। जो अभी मैंने बताया था आपको कि कुरुमुला एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए जो फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है, ये इंसेक्ट ट्रैप जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें ये एडल्ट को ट्रैप कर लेते हैं। इसके साथ में एक ये पाउडर है, टेल्कम बेस्ड फॉर्मुलेशन है, जिसके अंदर में एक बैक्टीरिया है बैसिलस सीरियस। ये बैसिलस सीरियस ये ग्रब्स को जो जमीन के अंदर में है, इनको डिजीज करता है, इस तरह से मिल्की डिजीज करके इनको मार देता है। और इस पाउडर को हम लोग जो हमारी खाद है FIM, उसके साथ में मिला करके खेत में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है, और जहां जहां ये गई है वो वहां पे जो ये कुरुमुला है, इसकी समस्या बहुत हद तक जो है घट गई है। जो क्लाइमेट चेंज हिमालयी क्षेत्रों में हो रहा है, इसमें कई नए इंसेक्ट भी आ रहे हैं, जैसे टोमेटो पिनवर्म है, आर्मी फॉलवर्म है, या लोकस्ट भी लास्ट ईयर इसका अटैक हुआ था। तो इन सब के लिए संस्थान जो है एडवाइजरीज जारी करता है स्टेट गवर्नमेंट को, और जहां भी इस तरह की समस्या आती है तुरंत उसका समाधान करने का प्रयास करता है। आप देखें, ये पिछले 17 से 21 के बीच में 14 टेक्नोलॉजीज हमने कॉमर्शलाइज की हैं प्राइवेट कंपनी के साथ में, और 58.37 लाख का रेवेन्यू इससे अर्न किया है। ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो कॉमर्शलाइज की गई हैं। ये मेज के हाइब्रिड्स हैं जो डिफरेंट कंपनीज के साथ में, ये बेबी कॉर्न है, ये स्वीट कॉर्न है, तो ये डिफरेंट कंपनीज के साथ में इनका कॉमर्शलाइजेशन किया गया है। ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, ये आने वाले समय में कॉमर्शलाइज, दे आर रेडी फॉर कॉमर्शलाइजेशन। ये छोटा संस्थान जरूर है, काफी रिमोट में स्थित है, बट आप देखें तो सीड हमारा जो है करीब 24 राज्यों में देश के पहुंच चुका है, और जो ये फार्म इम्प्लीमेंट्स मैंने बताया आपको 16 राज्यों में यहाँ से जा चुके हैं। अगर हम अपने जो ये मैंडेट एरिया है उसमें देखें, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर में इन जगह पे, और हिमाचल प्रदेश के इन जगह पे हमारी टेक्नोलॉजी जो सीड है वो पहुंचा हुआ है। अगर इम्पैक्ट देखें कुछ टेक्नोलॉजीज का, तो जैसे वेराइटीज का अप्रोक्सीमेट इकोनॉमिक वैल्यू 1991.3 करोड़ रुपीस पर ईयर आ रहा है। जो मिलेट थ्रेशर है 4.65 करोड़ लेबर सेविंग इसमें हो रहा है। वाइट क्रॉप मैनेजमेंट में मॉनिटरी बेनिफिट 16.79 करोड़। स्याही हल जो अपने VL स्याही हल है, मॉनिटरी बेनिफिट 2.14 करोड़। एंड जो स्मॉल टूल इम्प्लीमेंट से 18.82 करोड़। ये इम्पैक्ट है कुछ टेक्नोलॉजीज का। जो फार्मर्स के बीच में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं। एक तो हमारी डेडिकेटेड हेल्पलाइन है, जिसपे ये टोल फ्री है, फार्मर को इस पे कोई खर्चा नहीं होता है, ये सारा हम बेयर करते हैं। जो भी इसकी समस्या हो वो इस पे पूछ सकते हैं। आकाशवाणी से एक हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है कृषि समृद्धि, उसमें समसामयिक चर्चा की जाती है, किसानों के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका भी आंसर दिया जाता है। नीड बेस्ड SMS सर्विस, ये सर्विस ऐसी है कि हम जिन जिन किसानों से जुड़े हुए हैं उनका हम लोगों का, उन्होंने कब कौन सी फसल लगाई है उसको इंफॉर्मेशन लेकर के उनको कब उस फसल में क्या काम करना है वो जानकारी देते हैं। एम किसान सेवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, इसके थ्रू एक ही बार में आप कई सारे किसानों को जो है एड्रेस कर सकते हैं। और व्हाट्सएप, हमारे जो भी ट्रेनीज आते हैं उन सब के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और उसके अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उन्हें कोई समस्या होती है, हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी है, इसके थ्रू से हम देते हैं। इसके अलावा ये सब 3 हमारे मोबाइल ऐप हैं जिसपे किसान इनको डाउनलोड, ये गूगल प्ले पे फ्रीली अवेलेबल है, इनको डाउनलोड करके भी किसान जो है जानकारी ले सकता है। सोशल मीडिया पे भी हम लोग हैं, फेसबुक पेज है और ट्विटर भी है, और ये डिफरेंट नंबर्स हैं जो हमने पिछले साल के अंदर में जो किसानों के बीच में इंफॉर्मेशन दी है। ट्रेनिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोगों का। हम कैपेसिटी बिल्डिंग, स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग बहुत सारी कराते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, न केवल यहाँ के लिए बल्कि बाकी बाहर के स्टेट्स के लिए भी। और ये जो डिफरेंट एरियाज में जो ट्रेनिंग हुई है उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्राइबल सब प्लान के अंदर में
हम लोगों ने जो है काफी जो नीति माड़ा वाला एरिया है उसको कवर किया है, मुनशरी वाला एरिया कवर किया है, सामा लीती वाला एरिया कवर किया है और सितारगंज में जो एरिया है उसको कवर किया है। टोटल 27 नंबर्स ऑफ ट्रेनिंग की है 948 फार्मर्स और जो ये विलेज है 56 विलेजेस कवर किए गए हैं एफएलडीज में, जो कि 8 विलेज नियर चाइना बॉर्डर के हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट्स हैं। और कैलाशपुर जो गांव है वहां से हम लोगों ने बीज उत्पादन का भी उनको ट्रेनिंग दे करके बीन का 980 किलो बीज लास्ट ईयर खरीदा है। इसके अलावा जो भारत सरकार की योजना है शेड्यूल कास्ट सब प्लान, इसमें हमने एक डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में ये विलेज सेलेक्ट किया है लखनी, उसके अलावा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में दाड़िम और उसमें उत्तरकाशी में एक विलेज और बागेश्वर में एक विलेज हमारे केवीके के पास में, और ये सारी इनपुट्स दी गई हैं। और लास्ट ईयर कोविड के बावजूद भी जो है टोटल 52 पॉली हाउसेस हम लोगों ने इन किसानों के खेतों पे बनवाए हैं, जिससे कि इनकी आय में अच्छी खासी जो है वृद्धि हो रही है। ये देखें विलेज का एक लुक है और जो भगतोला मॉडल मैंने बताया था उसको हम लोग रेप्लिकेट करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। ये उसके अंदर क्रॉप है। इसके अलावा सर नॉर्थ ईस्ट की भी हमारे पास फंडिंग मिली थी, तो जिसके अंदर में हमने नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पे इतनी वेराइटीज और ये टूल्स, और वहां पे भी 25 पॉली हाउसेस हम लोगों ने बनवाए हैं। ये सारे टूल्स जो हमारे हैं ये वहां पे सप्लाई हुए हैं। और ये देखें आप चिरापूंजी हाईवे पे ये पॉली हाउसेस हम लोगों के द्वारा बनवाए गए हैं। लास्ट ईयर हमने एमओयू 4 यूनिवर्सिटीज के साथ में एमओयू साइन किए हैं। साथ में एक वेबिनार, नेशनल वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया था। रिसर्च पब्लिकेशन देखें तो पिछले 4 सालों के मुकाबले इसमें 83.5% की हमारी बढ़ोतरी है और ये बाकी पब्लिकेशंस के अंदर में 48.9% की बढ़ोतरी है। इनके साथ में सर अब जो वर्तमान में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें ये देख रहे हैं कि जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी हो, एक्सेलरेटेड ब्रीडिंग की हो या प्री ब्रीडिंग को, इसको उपयोग करके बेटर अडॉप्टेड वैरायटीज को कैसे डेवलप किया जाए। जो एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम है उनको डाइवर्सिफाई करके, उनको इंटेंसिफाई करके फार्मर्स का इनकम कैसे बढ़ाया जाए उस पर काम कर रहे हैं। और जो ट्रेडिशनल एग्री प्रोडक्ट्स हैं, उसके सेकेंडरी एग्री प्रोडक्ट्स हैं या फूड फॉर इनकम इनहांसमेंट, ये इन पे काम किया जा रहा है। और वाटर कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग और उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग हमेशा की तरह एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा, और कैसे वुमन फार्मर का जो लाइफ है, उसका जो ट्रेजरी है, उसको कैसे मैकेनाइजेशन के थ्रू रिड्यूस करके और कैसे उसको बेटर न्यूट्रिशनल एंड लाइवलीहुड ऑप्शन दे करके इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पे हम लोगों का फोकस है। इसके बाद ही ये मैं एक्नॉलेजमेंट सर सेक्रेटरी डेयर एंड DGICR एंड ऑल DDGs, JDGs, और थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने विस्तृत जानकारी दी अपने संस्थान के बारे में, और जैसा आपने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस अपने संस्थान के बारे में बताया, और उसके बाद आपने टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर की है बहुत सारे विलेजेस में अक्रॉस कंट्री, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, वैरायटी इंप्रूवमेंट के बारे में आपने बताया, और वाटर हार्वेस्टिंग, इसके साथ साथ जो प्रोग्राम आपने बिल्कुल सही बोला कि लैब से लैंड तक पहुंचाने की जो जरूरत है उसको आपने काफी हद तक पूरा किया है। मैं महोदय आपसे भविष्य में भी हम लोग कोलैबोरेशन रखेंगे, और SC/ST सेल हम लोगों का शीघ्र ही स्थापित होने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। पूर्व में भी हमने एक कार्यक्रम नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज उत्तराखंड चैप्टर के साथ हमने किया था, उसमें चक्रोता में आप लोगों का जो कार्य है उसको भी आदरणीय मंजू शर्मा मैडम जो DBT की सेक्रेटरी रही हैं, उन्होंने भी उसको काफी सराहा था। तो भविष्य में आपके साथ काफी कार्यक्रम हम करेंगे, पूर्व में भी किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरे को क्षमा करेंगे, मुझे दूसरी मीटिंग ज्वाइन करनी है, आई हैव टू लीव। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर वंदना ढींगरा फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस ऋषिकेश में हम लोगों के तकरीबन 26 परियोजनाएं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हैं वो चल रही हैं। अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्रोफेसर वंदना ढींगरा मैडम
ऋषिकेश से हम लोगों के जो एम्स ऋषिकेश है उसमें कोऑर्डिनेटर भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी करती हैं और पूर्व में भी परिषद के साथ जुड़ी रही हैं। आप जब HIST में हिमालयन इंस्टीट्यूट में थी तब से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सो नाउ आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर ढींगरा टू डिलीवर हर एड्रेस प्लीज। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, please. Okay. Thank you. Is my slide visible, sir? My slides are visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please go ahead. A very good afternoon, everyone. I'm very much grateful to Dr. Rajendra Dobhal, DG UCOST, for this opportunity to speak on the occasion of Vigyan Utsav and Himalayan Day, both of which are there today. I'm honored to be in presence of such an esteemed panels of directors of various institutions of national importance located in our state. And I'm speaking here today as a researcher working in this region for more than a decade. And I would be presenting my overall perspective of our institution for understanding of the research opportunities that may be available here. I'd like to acknowledge our Director and CEO, Professor Ravikant, for also providing me with the inputs and permission to present this over here. And Dr. Rajendra Dobhal, our Dean Academics, Professor Manoj Gupta, Professor Vartika Saxena, Dean Research at AIIMS Rishikesh. So I will be covering the vision and mission of this institute and the education opportunities that are available here, clinical services and facilities, and the various R&D activities which are there at our institutes. And I would end with a small photo gallery. So the vision of our institute is to achieve global standards in patient care by adapting national or international accreditation standards and developing a culture of excellence in professionalism, governance, and leadership to achieve global standards in providing medical education, excellence in public health, and in research. We also have a mission of providing patient-centered health services which are effective, efficient, and keeping safety at the top. We would like to achieve global standards in providing education. We would like to develop excellence in public health as well as in research as well. So this institute is a beautifully made institute which is located in a very scenic area, particularly in this region close to the Ganges, and it was located strategically to address the regional imbalances in healthcare services and research. Because in the state of Uttarakhand, most of it being a hilly region, the first base that falls from the people who are coming from the hills is Rishikesh. So that is why this institution was located in this place. It was established under the Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana's first phase and supported to be an autonomous body by the All India Institution Medical Sciences Bill in 2012. The first batch of MBBS students was enrolled in 2012, and the inpatient and outpatient services was started by 2013. It has over this nearly a decade metamorphosed into an institute of national importance. With presently, we have 125 MBBS and 100 BSc nursing seats. In addition to that, we also have various postgraduate courses like MD, MS, and even super specialties like DM and MCH courses. And all these activities are mentored by the nearly 300 strong faculty at our institute. We also have specialized clinics which have been started over the last couple of years. And from a 200-bedded facility, we have grown into a nearly 1,000-bedded capacity today. And we have 24/7 by 365 days emergency services started in 2017. So this is our institute, and this is the present image of our institute. So this is an overview of the the education courses that are offered at AIIMS Rishikesh, and we have a whopping number of around 1,700 seats for various courses available here. The faculty strength is around 232, and we have a strong force of 628 resident doctors who run the hospital, as well as all the research activities are facilitated by them, and they are in various teaching and non-teaching positions. So if you see this graph, you can see that the OPD visits have increased exponentially over the past 7 to 8 years, and it is more than 25 lakhs today. And we have grown into having many specialty clinics over the past few years.
We have this list of 105 special clinics. These clinics mostly run in the afternoon, and they are targeted towards a particular area. So we can do a lot of good research in addition to providing very good specialized patient care in all these areas. We have an Ayush department, which involves the Ayurveda and all the other other sciences that we have, medical sciences, Unani and homeopathy as well. And these again have a very high footfall in our OPDs. We have a high bed occupancy rate is around nearly 100%, means the hospital is all the time full. We have served a lot of patients in indoors. We have around 269 ICU beds which have ventilators, and a large number of surgeries are being performed regularly. And these are the areas in which the surgeries are being performed, the maximum number and the minimum number of various specialties. Coming to the various facilities that we have coronary cath lab here. We have the endoscopies, the bronchoscopies, the dialysis areas. We have various surgeries which are super specialized in the form of spine surgeries, the joint replacement. We have advanced treatment for cancers in the form of an advanced radiotherapy unit, which has high energy linear accelerators, brachytherapy, and a 16-slice CT simulator. The radiotherapy department has also grown over the past few years, and since its inception, we have treated thousands of patients with radiation. This is another radiotherapy equipment that we have. This is our department, the department that I belong to, nuclear medicine and molecular imaging, in which we do imaging as well as therapy with radioisotopes. We have an integrated breast care center, which offers all the services related to breast care to the patients in one particular area, which involves diagnostic as well as therapeutic strategies. Everything is located in one roof. So the IBCC has been serving thousands of patients over the last 2 to 3 years since its inception. The trauma center, and we also have heli ambulance services since August 2020. We have a very advanced blood bank facility, which is the backbone of any institution which takes up so much of tertiary care work like major surgeries and trauma. This is our 3 Tesla MRI machine, which is one of the most advanced machines available. These are our operation rooms, just an example of those operation rooms. We have around 54 operating theaters in our institute. We have robotic surgery, which is a very regular phenomena, and we have regular robotic surgeries at our institute in all these specialties of urology, obs and gynae, pediatric surgery, and ENT as well. Advanced robotic rehabilitation. In this, the patients who have various neurological and musculoskeletal disorders, they are guided by robotic assistance in order to undergo rehabilitation. So the human assistance is minimum, and this automatically it analyzes the patient's response to a particular treatment, and accordingly it stimulates and assists the patient. If you can see here, the patient is nearly suspended. This patient is a patient of paralysis, and she is nearly suspended with these harnesses, and she's automatically learning to walk and to cope up with her muscular imbalances with this particular machine. This is another example of the same robotic rehab machine. We have NICUs. We have the Ayush Center, which offers yoga courses and yoga treatments as well. In the COVID-19 pandemic in 2021 and 2020, all the doctors in our institutes were involved in COVID-19 management, irrespective of their specialty. We had nearly 200 ventilator beds, and we had nearly 500 to 600 beds which were having oxygen for other patients. Then all the faculty was involved in the duties, and all the residents, even if whether they were from pediatrics or from pathology or any specialty, were all involved in treating the patients or taking care of the COVID patients. So this was a major activity that we have been undergoing since the last 1.5 years. We have started the vaccination at our institute, and it is one of the largest vaccination programs in this region, which has been started over the past few months. We have treated nearly more than 15,000 cases of COVID-19. And after the COVID, there was a pandemic of mucormycosis infections, which was also there for a long time. And we have got hundreds of cases of advanced mucor, which have all been operated and treated successfully. Other facilities we have is a herbal garden, which has various plants, and we can have
this Ayurveda research on this herbal garden-based plants. Then we have a very advanced, this is something new which we have, a simulation lab. Here, actually, simple techniques like giving injections or putting IV lines or even putting tracheostomies or performing various procedures. We don't need to train the students on real patients. These simulation machines are very well equipped to train these students, and then they can go and perform the actual procedure in the patients in real time. So these simulation labs are very important for teaching, for learning new techniques, as well as they have a lot of potential for doing research on newer techniques. We have advanced biomedical waste management systems, and we have mechanized cleaning systems which are much more hygienic and reduce infections. This is a device which was developed by the R&D at AIIMS Rishikesh for patient monitoring by a remote mechanism and non-contact way of monitoring the patients, which reduces even infection in the COVID times, as well as it is more safe for the healthcare worker. So we have this unique langar facility which has been facilitated by our Honorable Director, sir, and in collaboration with the Himkund Sahib Gurdwara, the space has been offered at our institute, and they perform the langars regularly, and it is a very big boon for all the patients and relatives of patients who are in the campus. We have sports and recreation, which facilitates our physical health and helps us to perform better in all our work areas. So particularly coming to research and development activities at AIIMS Rishikesh, we have a lot of scope of intramural, extramural projects, and there are hundreds of projects which are going on in our institute right now. And the student projects in the form of thesis and are mostly non-funded projects, and the funded projects are usually taken up by the faculty as a PI. And the intramural projects that we have at AIIMS are usually sponsored. We have around 5 lakh rupees limit for one project, and a faculty member can take up 1 to 2 projects at a time. Extramural, we can get funding from various organizations. And this is the graph which shows the postgraduate thesis of research that are taken place in our institute over the past few years. We have around 200 theses being published every year, and these theses are mostly all converted into, or they turn out into very good research papers every year. So this is one of the most important areas of research. Then we also have undergraduate research projects. The undergraduate students are exposed and they are encouraged to take up some or the other small research project, and they do it during their MBBS or during their BSc courses. This is available on our website. The funded projects, our main funding agencies, of which UCOST is one of the major contributor for our supporting our research for all the departments and all the areas of our institution. And we have got a lot of projects which are going on under the ICMR, DBT, under the SERB and DST as well as many international agencies. So these are the major funding agencies for AIIMS Rishikesh, and UCOST is very supportive in all our research activities. We have MOUs with various institutions of national importance as well as international importance. So facilitating medical research is all begins from the MBBS level, where we have a milieu of research and development during the medical education itself. So we have clinical exposure to the students. We have a very high quality simulation lab, evening clinical postings which encourage the students to think in the evenings when they see the patients on the rounds and they have some new thoughts, so they could think of some research projects. We have various courses. We have a department of continuous professional development at our institute, which teaches all the basics of research methodologies and soft skills. So all the students are having a good base, and through this they can think of going into research activities at a very young age. Ayush is another area. Because of Ayush, we have a collaboration of Western as well as Indian or our cultural system of medicine, and we have many projects that are going on
of Western medicine along with Ayush, seeing the results of very encouraging results of many of the projects which we have seen. And research assignment is given to most of the MBBS students, maybe in the form of a very small project, as simple as taking the blood pressures of obese patients who are coming to the OPD, or taking the symptoms of patients who are having diabetes of a particular level. So just simple research assignments are given to these students. Assessment at our institute, when we do the assessment of the students, it is of a very a bit different from the other institutes where mostly subjective examination is the core. So our internal assessment is very robust. We have regular internal assessments. We have clinical vignette based exams, and we have MCQ based, that is OSCE and OSPE based exams, which further add to the thinking of the students. And soft skill again are assessed separately. So all these, give the students a thought-provoking kind of learning, and not just sitting and mugging up the books, which is a very norm in medical education. So this again provides a very good base for the students to take up research at a young age. So this is one of the projects which I have been participating in by courtesy of UCOST. And I was awarded for this particular project, that the initial results of this project. And so I'd like to just show you a few images, and that is all I have to say. So this is our institute in the evening, just around 15th August. And we have beautiful lighting here. This is the scenic view from one of the top of one of the hostel buildings, where we can see here, this is this building with fully glass building is our nursing college. And if you see behind, these are three diamond-shaped buildings located in one line. And these are our main institute building, which the first one is the medical college block. The middle one is the hospital block. And the third one is the OPD block, which houses all the outpatient areas. And you can see the beautiful hills of Himalayas surrounding us. The hostel buildings surrounded by the various courts. And our Honorable Director, sir, with the Vice President of India on our first convocation and our second convocation. And this is our Director, sir, with the DG, sir, planning for further areas of research. And we have been He was not the Vice President, he is the President of our Indian Republic. Sorry, sir, I'm sorry. Yeah. So that Venkaya, sir, was... So I'm sorry for that. So sir is discussing with our director, sir, about upcoming projects, and we have a lot of ideas for taking up new projects on COVID-19, because we've seen we have very good experience on COVID-19 over the past 1.5 years. So sir has been giving us very good suggestions for taking up these projects, and that is what is being discussed here. So I'd like to thank you and thank again, sir, for this opportunity speaking over here. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am, for your elaborative presentation on AIMS initiative for our state, as well as what your facility you are having, the state-of-the-art facility in AIMS. And as you very rightly pointed out, that 26 research projects funded by UCOST, AIMS faculty members, and you are also among them, and looking after the thyroid project of ours and our routine activity there. Soon we will be having a COVID Resilience Center, Department of Science and Technology, Government of India agreed to give us funds on that. We are developing some projects over there, and we are looking forward that AIMS will be a party to that, and your personal involvement for that. So thank you very much for your nice presentation. And now we have reached in a concluding part of our program, although it's around 1 hour plus, because a lot many presentations, excellent presentations. So on behalf of Uttarakhand Council for Science and Technology and Department of Science and Technology, Government of India, I'd like to thank our Honorable Minister Shri Banshidhar Bhagat Sahab for his video and blessings. I'd like to thank Dr. Renu Sarup Madam, Secretary, Department of Science and Technology, Government of India, Dr. Depriya Datta, Advisor, C Division and SSTP Division. Under his able guidance and leadership, we are organizing this program and looking forward for more program in Uttarakhand. Dr. Rashmi Sharma,
She's coordinating lot many activities of science, SSTP division and C division, and Dr. Ravi Prajapati. Invited learned speakers, Dr. Kashyap from GB Pant University, Dr. Prakash Chauhan from Indian Institute of Remote Sensing, Dr. Ranjan Ray from IIP Dehradun, Dr. Kalachand Sen from Wadia Institute of Himalayan Geology, Dr. Lakshmikant, Director ICR India Vigyan from Webcast Almora, and Dr. Professor Vandana Dhingra Madam from All India Institute of Medical Sciences. And we are also thankful to all the participants across the country from various science and technology department councils. We are also thankful to our Director General Sir, Dr. Rajendra Sir, under whose guidance we are doing all this program across the state. And we request all the councils members, those who are present here, we can collaborate further on what all we are doing here. And we are also looking your presentations also in near future. We are looking forward for more collaboration with institutes located in Uttarakhand as well as across the state. So with these words, we'll like to end up this program here. Once again, I'd like to thank on behalf of UCAS to each and everyone. Thank you.